जो हमें योग्य बना पाएगा इन सारी चीजों को एकत्र करने के लिए या समझ पाने के लिए। So I asked the other day when devotee trying to understand something, I said, when you're trying to understand something, do you just go to your own intelligence, mind, and senses to try to figure it out, or do you ask Krishna, what is your intelligence, mind, and what is your understanding? Who are you asking when you're trying to figure something out? तो मैंने एक बात को प्रश्न को जब आप कुछ समझने का प्रयास करते हैं तो क्या आप अपने खुद के मन बुद्धि को प्रश्न करते हैं या किसके पास जाते हैं? आप कृष्ण के मन बुद्धि के पास जाते हैं। I said 99.9% of the people, all they know is their body and their mind under most material nature. प्रभुपाद बताते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन व्यक्ति 99.9% लोग केवल अपने शरीर और मन को जानते हैं। And that this bodily concept of life is the material disease. और ये शारीरिक चेतना ही है भौतिक बीमारी। And all of that intelligence, mind, and senses on that bodily platform is contaminated, controlled by Maya. ये सारी मन, बुद्धि और इंद्रिय जो शारीरिक स्तर पे ये सब माया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। And we are completely addicted to mental speculation. और हमें पूरी लत लगी है मनोधर्म करने की। Which is all just mis and disinformation. जो केवल हमें गलत और दोषपूर्ण जानकारी देता है। But in our foolishness or ignorance, we're taking it as absolute. लेकिन हमारे अज्ञान में और मूर्खता में हम उसको परम सत्य मानते हैं। And why? और ऐसा क्यों है? Because it came into our mind. क्योंकि हमारे मन में हमारे बुद्धि में आया तो बस ये परम सत्य होगा। And then when I check my heart, my sentimental heart, I feel so much emotion, so that's also a sign, it must be absolute. और जब अपने हृदय में देखता हूँ तो मेरा जो भावुक हृदय है वो उसको सत्य मानने लगता है तो बस ये सत्य होगा। So we have a broad false ego platform saying definitely we understand it. तो हमारा एक बहुत बड़ा विचार है जो हमें सोचने को मजबूर करता है कि मैं ये समझता हूँ। And then we're checking with our senses and our sentimental heart and emotion, and we're feeling some emotional sentiment, and we say, oh, that is also proof that is absolute. और हम अपने भावुक हृदय और भावुक इंद्रियों के पास आते हैं इसको पुष्टिकरण करने के लिए और वो भी हमें यही बताते हैं I feel it in my heart. क्योंकि मुझे मेरे पूरे हृदय से ये That's what we're up against. तो ये हम इसके And खिलाफ since time immemorial, that's how we've always gathered information and knowledge. और श्री प्रभुपाद ने बताया है कि 80वें समय से इसी तरह से हम जानकारी एकत्र करते हैं। That's how we've always tried to process knowledge. इसी तरीके से हम हमेशा ज्ञान को पाने का प्रयास So करते now हैं। you come to Krishna consciousness and you have to understand that none of that will work. अब आप जब कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है ये कुछ भी काम नहीं Whatever है। we come up with that process is all faulty. जिस भी प्रक्रिया से हम जाने का प्रयास करेंगे ये सारी प्रक्रियाएं गलत हैं। And now you're asking Vedic knowledge in the process of devotional service is asking, forget about all of that stuff. अब जब वैदिक ज्ञान Don't listen to any of that stuff. जब आप यहाँ लेने के लिए आए हैं तो उसको उन सारी चीजों को आपको सुनने की जरूरत नहीं है। So without faith and trust in Krishna, how can you suspend all of that? तो बिना अगर आपको कृष्ण में श्रद्धा या विश्वास ना हो तो कैसे आप उन सारी चीजों को त्याग कर पाएंगे? How will you trust it? कैसे आप विश्वास कर पाएंगे? We trust ourselves, our intelligence, mind, senses, feelings, emotions. That's what we're trusting. हम खुद पे विश्वास करते हैं खुद की बुद्धि मन और इंद्रिय के ऊपर। But our intelligence, mind, senses, emotion is what has put us in trouble in the first place. लेकिन हमारे मन बुद्धि इंद्रिय ने ही सबसे पहले हमें इन सारी गलतियों में फंसाया है। So we have a dilemma. तो हमारे सामने एक दुविधा Because our process has proved over time that it never works, and it certainly never works over time. और हमारे समय के साथ इस प्रक्रिया ने हमें दिखा दिया कि कभी काम नहीं आता और निश्चित ही आगे भी काम नहीं आएगा। So we must admit what is the reality of the end result of us acting as our own gurus. तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमें अंतिम लाभ क्या मिला जब हम खुद के गुरु के रूप में कार्य करते हैं। How intelligent, how wise, how realized are we really? हम कितने बुद्धिमान, कितने चतुर और कितने समझदार हैं। And have we received the right information if the end result is all faulty and the source of our suffering condition? और क्या हमने सही जानकारी प्राप्त की अपने मन इंद्रियों के माध्यम से अगर अंतिम फल हम पूरी तरह से दुख में हैं? Because ignorance is the source of all suffering, of all the suffering. और बात कहते हैं सारे दुखों का कारण हमारा ये अज्ञान है। So whatever suffering we have grossly, physically, mentally, emotionally, all of that suffering is due to ignorance. तो हमारे जो भी दुख हैं शरीर में, मन में, भावनाओं में, किसी भी तरह से ये सारे हमारे अज्ञान
ज्ञान का दुख का कारण। So if everyone feels peaceful and happy and satisfied with the results, then this information is not for you. You've already reached success in your mind. अगर आप पहले से सुखी हैं, संतुष्ट हैं और आप सोचते हैं आपको और कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। At the end of this scientific material experience, you realize, okay, none of it turned out like I thought. अंत में इस वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चलेगा कि कुछ भी चीज़ जो हमने की थी वो काम नहीं And Prabhupada says the conditioned soul, they don't know what to do and what not to do, what to do, what not to do. वो बताते हैं बंद जीवों को ये पता नहीं होता क्या करना है और क्या नहीं करना। So we're in a world which is upside down, तो हम ऐसे जगत में हैं जो ऊपर और inside out. भीतरी और बाहर। Maya has made truth appear to be not true. और माया ने सत्य को असत्य दिखा And दिया। that which is not true, she said, no, that is true. और जो असत्य है माया वो कहती है ये सत्य है। And then what is unreal, Maya says, no, no, that's real. और जो नकली है माया कहती है ये बहुत सत्य है। So your thoughts, your intelligence, your mind, your senses, your emotion, that's real, it's absolute. जो आपके विचार हैं, जो आपके मन, बुद्धि, इंद्रिय जो बता रहे हैं, वो सत्य है, वो असली है। And what is actually real and what is the reality, then Maya says, no, no, this should not be trusted. और जो असल में असली है, सच्चाई है, माया कहती है ये No नहीं। understanding of it, no experience of it, so it cannot be real, it cannot exist. हमने इसको कभी अनुभव नहीं किया जीवन में, हमने पहले कभी समझा नहीं, ये अस्तित्व में नहीं है, इसलिए सच्चाई And नहीं है। even if we do, we have no qualification to understand it or to realize it. और अगर हो सकता है मान भी ले सच्चाई, लेकिन हमारे पास योग्यता नहीं है उनको साक्षात्कार करने की चाहिए। And then you come into spiritual, society or institution is supposed to help you to understand how to realize it, and they're saying, oh, it's inconceivable. जब आप आध्यात्मिक संस्था में आते हैं इन सारी चीजों को समझ पाने के लिए, इसका साक्षात्कार कर पाने के लिए, फिर वहाँ जाकर पता चलता है ये संभव नहीं। आप लोग इतने उन्नत नहीं, चीजों को साक्षात्कार आप लोग योग्य नहीं हैं। And if you really try to understand it, you're going to offend everybody. और अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों के प्रति अपराध करेंगे। And you're going to burn in hell. और आप नरक में जलेंगे। Eternally. नित्य रूप से। So why even try? तो आप प्रयास मत कीजिए। So somehow you just have to be satisfied with this idea that we're trying to figure out endlessly through mental speculation that which is inconceivable, and you have to be satisfied with that. तो अंत में हमें कहाँ संतुष्ट रहना है कि अपने मानसिक मनोधर्म से वो समझने का प्रयास करते रहिए जो आप कभी समझ नहीं पाएंगे। Everyone's on the search, so that everyone's searching. We're in the bridge program to nowhere, the bridge to nowhere. और ये हमारा जो शोध है यही तक चलता रहेगा कि इसका कोई अंत नहीं है, ब्रिज लगाया गया है लेकिन वो ब्रिज कहाँ जाएगा पता नहीं। So you're on the endless bridge to nowhere, and you should be satisfied that you're on the bridge. आप एक असीमित ब्रिज के ऊपर चले जा रहे हैं और ये भी नहीं पता उस ब्रिज कहाँ जाने वाला है, इसका कोई अंत नहीं है। Ravana, the big demon, he said, you know what, why go through the Vedic process? We'll build our own bridge there. जैसे रावण एक असुर थे, उन्होंने कहा इस वैदिक प्रक्रिया को हम क्यों जाएं, हम अपना खुद का एक ब्रिज बनाएंगे स्वर्ग What's with this double divyam and all these rules and regulations that these foolish devotional guys do, you know? ये सब क्या Let's make it short and sweet, we'll just cheat the whole system. ये क्या नीति नियमों को पालन करते हैं, भक्ति भाव लेकर आते हैं, ये सब प्रक्रिया को हम सारे को ठाक के हम आगे जाएंगे। And that's what the demons do. और असुर यही करते हैं। Okay, enough with the massage on the earlobes. Okay. अपना मसाज कीजिए उनको। Alright, you awake now? अब आप जगे हुए हैं। He's in samadhi, like massaging the boy's earlobes, you know. वो पूरे समाधि में चले जाते हैं, अपने बच्चे के कान को मसाज Can't hear a word we're saying, you know. एक साथ सुनने वाले के Totally distracted. पूरी तरह से भटके हैं। That's what the stupid mind does. ये है बेवकूफ मन का काम। You cannot hear anything. कुछ भी आप सुन नहीं सकते। So he's on the bridge to nowhere. वो इस ब्रिज पे You're कहीं just नहीं जा on रहे हो। the royal bridge to nowhere. ये एक शाही ब्रिज जो कहीं नहीं जाने वाला। It's like escalator, just keep going. Right? You जैसे don't जब even have आप to do anything. You're just standing there. You're on the royal road, the royal escalator to nowhere. वो जैसे अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, उस पे आप खड़े हैं, वो अपने आप चले जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ये सारी एस्केलेटर है जो So although you're not gotten anywhere, तो आप कहीं नहीं पहुँचने वाले। you should feel satisfied that at least you're moving something. आपको इसी बात से संतुष्ट रहना है कि आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं। And just somehow have blind faith and trust that there's some positive thing going to come at the end of that road. और ये अंधविश्वास आप रखिए कि इस रास्ते में कहीं अच्छे जगह पहुँच जाएंगे।
Right? Then you get to the end and it's just like a drop off. और फिर जब अंत तक पहुंचते हैं तो सीधा नीचे गिरना है यार। It's like the the stairs they put up to the plane when you land. Right? So everyone's going up the stairs. There's no plane. There's no door. You're not going anywhere. You're just falling off again. जैसे आप विमान में चढ़ने जाएंगे तो चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगाई जाती है, तो विमान जा चुका है, अब सीढ़ी पे चढ़ने वाले हैं, कोई रास्ता नहीं, कोई विमान नहीं है। So we have to understand what are we actually trying to understand. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम क्या समझने की And how कोशिश कर रहे हैं। that platform, Shuddha Sattva platform, that is inconceivable to conditioned souls. और कैसे ये शुद्ध सत्व स्तर बद्ध जीवों के लिए जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। Especially from Rajagun, Tamagun. विशेष करके रजोगुण और तमोगुण स्तर से। Therefore, mercy is the only thing that's required. इसीलिए कृपा ही एकमात्र चीज जो Mercy of Krishna, mercy of Guru, कृष्णा की कृपा और गुरु की and कृपा mercy of the Shastra. और शास्त्र की कृपा। Then it's just a question of what do you have to do to want or to deserve mercy. प्रश्न यही है कि आपको क्या करना होगा जिसके माध्यम से आप कृपा के लायक हैं। Because now you have to admit your defeat. क्योंकि यहाँ पे आप अपना हार मान रहे हैं। You have to realize, okay, everything that I thought that I knew that I could do, my strength, my intelligence, my merit, whatever my experiences, my scholarship, everything that I have, everything that I thought I knew, every strength that I imagined I had, all of it failed when it came to trying to really absolutely understand, fourth dimensional Shuddha Sattva topics, transcendental topics. आपको यहाँ आकर देखना होगा कि आपने जो भी सोचा, जो विचार किया, जो योजना बनाई, जो भी प्रयास किया, और ये सारे कुछ असफल हो गए जब असल में शुद्ध सत्व स्तर की चीजों को समझने, चतुर्थायाम की चीजों को समझने का समय है। So what are we trying to understand? How it's beyond where we're at? हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं ये बहुत ही परे है, वर्तमान में हम मौजूद हैं उसके दुनिया The में। power of mental speculation, even Lord Brahma himself was bewildered by the power of his mental speculation. यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अपने मानव धर्म से पूरी करते हुए भ्रमित हो गए जब वो भगवान को मनोधर्म से। So do we want to measure the power of our intelligence and mind and mental speculation against Lord Brahma? तो हमारा मन की शक्ति, मनोधर्म की शक्ति क्या ब्रह्मा से भी ज्यादा है? Because he failed at the end. क्योंकि अंत में ब्रह्मा भी असफल हो गए। But we're going to figure it out. लेकिन हम पता लगाएंगे। That's the definition of insanity. ये है पागलपन की परिभाषा। Does that make sense? So do you have are you losing faith and trust in the power of your own mental speculation? तो क्या अब आप लोगों का विश्वास कम हो रहा है, श्रद्धा कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है आपको मनोधर्म के ऊपर? To come to some absolute conclusion? कि आप किसी परम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे इसके माध्यम से। Right? So it says, just hear Guru Sadhu Shastra coming from Krishna. इसे कहते हैं केवल गुरु साधु शास्त्र को श्रवण कीजिए जो कृष्ण से Who's a guru? कौन है गुरु? Who's a Shastra? What is Shastra? शास्त्र क्या है? What translation are we listening to? हम किन के अनुवाद को सुन रहे हैं? What is the presentation? Is it apparent or is it realized? Shastra. ये प्रस्तुति कैसी दी जा रही है? ये केवल बाहरी है या फिर साक्षात्कार किया है शास्त्र क्या है? So what kind of Guru Sadhu Shastra are we listening to? तो किस तरह के गुरु साधु शास्त्र को हम श्रवण कर रहे हैं? And then how is it that it's all seemingly different or opposite or colliding points of view? और कैसे बाहरी रूप से देखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ मतभेद हो रहा है, कुछ टकराव हो रहा है और कुछ अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं सभी जगह। Then how do we reconcile all of that? इन सारी चीजों को हम कैसे एक जगह एकत्र करते हैं? Now I used to study read Prabhupada's books for hours every day for years and years. और मैं श्री प्रभुपाद की किताबें हर दिन घंटे पढ़ता था। I was thinking I was pretty smart. मैं सोचता था मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। And by my study and scholarship, I could understand everything pretty well. और मेरी पढ़ाई लिखाई से मैं सारी कुछ चीजें समझने में कम नहीं था। And then I told you, when I heard from a self-realized soul who realizes the information, then I understood that many things I misunderstood or was incomplete and shallow or just theoretical. और मैंने बताया कि जब मैंने ऐसे व्यक्ति से श्रवण किया जिसने आत्म साक्षात्कार किया है और जितनी चीजें मैंने समझी थी वो मैंने गलत समझी थी और बहुत सारी चीजें मैंने सही समझी थी वो पूरी नहीं थी और कम गहराई तक उसका साक्षात्कार हुआ। So all of those things have to be understood because it's a scientific process. इन सारे चीजों को समझने की जरूरत है क्योंकि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। Therefore, the process of
bhakti is process of hearing. श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये भक्ति का पद श्रवण का पद है। And out of all the ninefold processes of bhakti, beginning with Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing is first most important aspect of devotional service. और इस भक्ति की प्रक्रिया में नवदा भक्ति में श्रवणम सबसे पहला और सबसे पहला। Hearing from who? लेकिन किससे श्रवण करना? Right, because the speaker must be bona fide and authorized and empowered. क्योंकि प्रवक्ता को प्रामाणिक, अधिकारिक और सशक्तिकरण प्राप्त किया हुआ है In parampara. परंपरा के माध्यम से। And we must also be qualified. और हमें भी योग्य होना होगा। Means that we must be desperate and, let's say, perfectly anxious, Prabhupada says, to receive this information. So if we are helpless, hopeless, and we're realizing the reality of our condition under the three modes of material nature being punished in the material world, then we will be much more eager and anxious to receive that knowledge which can give us that type of relief from all the suffering and the ignorance. अगर हम इस तरह के अपनी परिस्थिति को जान पाते हैं कि हम अज्ञान में और दुख भोग रहे हैं यहाँ पे और ये जानकारी हमें इस दुख में परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है तब हम ज्यादा उत्सुक होंगे इसको सुन पाने के लिए इसको ज्ञान करने। So we have to first admit our defeat. पहले हमें अपनी हार स्वीकार करनी है। Arjuna was trying to manage everything and figure everything out from a Vedic point of view. तो अर्जुन सारी चीजों को व्यवस्थित करना चाहते थे, खुद से पता लगाना चाहते थे, वैदिक चीजों का इस्तेमाल। And at the extent of all of his arguments and his intelligence and his mental speculation and his adjustments and his reconciliation of all of those points, he said, I'm still not satisfied with my results. और अंत में जब अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करके मनोधर्म का इस्तेमाल करके चीजों को एकत्र करने का प्रयास करके उन्होंने कहा मैं अपने फलों से संतुष्ट नहीं हूँ। He was smart enough to realize I'm not satisfied spiritually and I'm not satisfied materially. तो वो इतने बुद्धिमान थे वो समझ पाए कि ना तो मैं भौतिक रूप से संतुष्ट हूँ ना आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हूँ। Then he surrendered to Krishna. और तब उन्होंने कृष्ण को जाना। Then he was all ears, perfectly anxious to hear how do I get out of this suffering condition that I put myself in. तब वो अपने पूरे कान खोल कर वो सुनने का प्रयास किया कि मैं कैसे इस दुख की स्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। So anyway, there was many things that we were reading this morning. We can discuss also further about that. We had in mind, we were talking about Jiva Tattva issue. And then when I was reading different things, then Krishna, Prabhupada, Mercy of Sri Guru Ganga, then I came across something that was very nice that I never saw before that talked about this topic. और इस तरह से कृष्ण श्री गुरु गौरांग की कृपा से मुझे कुछ ऐसे विषय मिल पाए जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। So I took it that since I didn't have that reference or the pointed in that direction that we were meant to discuss that. मैं सोचा था हमारे पास वो सारे रेफरेंसेस नहीं हैं जिस विषय में हम बात करना चाह रहे थे उसको ढूंढने का प्रयास। So we have to surrender what Krishna is showing us. हमें शरणागत करना पड़ा जो कृष्ण हमें दिखाया। And then we'll read that and then you see how it hits you, how you understand it. और हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपको प्रभावित कर रहा है, कैसे आप इसको। Because Srila Prabhupada says many different things in different ways in different places. Seemingly they're all sometimes opposite of each other. कई बार श्रील प्रभुपाद ने कई जगहों पे अलग-अलग तरीके से बातों को प्रस्तुत किया, कई बार देखने में वो लोग वो बातें बिल्कुल विपरीत करते हैं दूसरे। So how do you reconcile those things? तो कैसे आप उन सारी चीजों को समझ पाएंगे? I remember hearing from Srila Govinda Swami, and he would speak many things that I never heard before. और मुझे याद है कि मैं श्रील गोविंद स्वामी महाराज को सुनता था और वो ऐसी बातें कर रहे होते थे जो मैंने पहले कभी नहीं At सुनी। first I was nervous about that. तो शुरुआत में मैं थोड़ा सहमा रहता था। Because I wanted to double check that everything was coming from Prabhupada's books and teaching, but nobody was speaking and referring to the Prabhupada's books and teachings with what he was presenting. और मैं सारी चीजों को श्रील प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से देखना चाहता था कि जो वो बता रहे हैं उनकी किताबों में मौजूद है क्योंकि कोई भी बता नहीं सकता। So he had to prove to me many times that everything that he's saying, that Krishna is making him say, is in Prabhupada's books and teachings. और हर बार उन्होंने हमें कई बार उन्होंने मुझे साबित करके दिखाया कि जो कृष्ण उनके माध्यम से बता रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद की किताबों में मौजूद है। And that has to happen enough till Krishna convinces you. और ये आपके साथ उतनी बार होना चाहिए कि कृष्ण आपको पूरी तरह से आश्वस्त करे। Otherwise we'll always be guarded.
वरना हम हमेशा अपने आप को बचाते There will always be some skepticism, some fearfulness, अपने आप को बचाने का प्रयास करें, कुछ न कुछ भय हमारे अंदर है and some doubts may also come. और कुछ संदेह भी आ सकते हैं, Especially when someone is saying something that you really never heard before or considered before. विशेष करके जब आपको कोई ऐसी बात बताए जो पहले आपने कभी सुनी नहीं है, पहले कभी आपने विचार नहीं किया, That's natural. बहुत स्वाभाविक बात है। Right? So we have to trust Krishna. कृष्णा That's the first thing. ये सबसे पहली बात है। Because if we're sincere and serious about understanding Krishna and trying to surrender to Krishna and to get Krishna, then why we should be fearful and anxiety? अगर हम गंभीर हैं कृष्ण को शरणागत करने की सेवा करने वाले, हमारे अंदर भय और चिंता क्यों है? Krishna says, if you surrender to me, there'll be no fear and anxiety. कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो कोई भय और चिंता नहीं रहेगी। So if our ultimate purpose and desire is to genuinely understand Krishna and Krishna consciousness and to get Krishna, then this fear and anxiety, this type of feeling, we should understand that's coming from Maya. अगर हम कृष्ण भावना के प्रति समझने का प्रयास कर रहे हैं अर्थात कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर कोई भय और चिंता हमारे पास आएगी तो हमें समझना चाहिए For so long we're just listening to our feelings and emotions, so we've developed this type of bad habit and over-dependence on our feelings and emotions. तो काफी लंबे समय तक हम अपने मन अपनी चिंताओं को सुनते आए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि केवल भावनात्मक स्तर पे है। Because we're always thinking that we have to protect ourselves. क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें खुद को बचाना है। So in one sense, like animals, they have to protect themselves. जैसे ये पशु का स्वभाव है, वो अपने आप को बचाने का So it's a natural animalistic instinct. तो ये एक स्वाभाविक पशु की प्रवृत्ति है। But humans are not in human consciousness, let's say humans in human consciousness, then they're not supposed to feel that. तो अगर मनुष्य की चेतना में है तो उसे इस भय का अनुभव नहीं होना चाहिए। Because Krishna is fearless, it says even fear itself, herself is afraid of Krishna. तो कृष्ण भय है, कहते हैं कि कृष्ण भय स्वयं कृष्ण से भय खाता है। And the soul by its nature is Satchit Ananda Vigraha. The soul has no fear. और आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद विग्रह, आत्मा के अंदर कोई भय नहीं है। So if we perceive any type of fear, we should understand that is due to influence of Maya on the bodily platform. तो अगर हम किसी तरह का भय अपने अंदर देख पा रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ये माया का प्रभाव है, ये शारीरिक स्तर है। If we're on soul platform, depending on Krishna, then this fear will gradually leave us. अगर हम आत्मा के स्तर में हैं, कृष्ण के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, तो ये भय धीरे-धीरे स्वयं चला जाएगा। And we should be very introspective to understand and realize all of these things scientifically. हमें बहुत ही भीतरी छानबीन करती रहनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से देखते रहना चाहिए हमारे As soon as we feel this emotion of anxiety or fearfulness, we should understand, oh, this is bodily concept of life. तो जैसे ही हम ये भय, ये भावनाएं, ये चिंताएं हमारे अंदर देखेंगे तो हमें समझना चाहिए शारीरिक स्तर हमारे So the more tamagun, rajagun, let's say rajagun, tamagun is just like, you can't feel anything. तो चलिए मान लो तमोगुण रजोगुण, तमोगुण नहीं, पर तमोगुण में तो हम कुछ भी महसूस ही नहीं कर पाते, रजोगुण में। But let's just say you're a little more elevated than the Shuddha Tama platform. चलिए मान लेते हैं आप शुद्ध तमा से थोड़े ऊपर होते हैं। Then we should feel what is fear and anxiety. तो हमें महसूस होता है भय और चिंता क्या होता है। What is threefold miseries? तीन भौतिक ताप क्या होते हैं? So if we cannot feel threefold miseries, then we're just Shuddha Tama, pure ignorance. And this is really not for you, अगर आप ये तीन तरह के कष्ट अपने ऊपर झेल नहीं पा, समझ नहीं पा रहे, हमारे ऊपर फिर रहे हैं, तो आप शुद्ध तमा में हैं, आपको आपके लिए जानकारी नहीं। Of course, somehow, if you're sitting in that way, somehow it says it can touch your ear, somehow gradually penetrate through all the steel, फिर भी कहते हैं कि अगर आप मौजूद हैं, बैठे हैं, तो फिर भी किसी तरह ये स्टील को छीलता हुआ आपके अंदर जा सकता है। But let's say we're conscious enough that we can perceive threefold miseries. लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी चेतना इतनी उन्नत है कि हम तीन तरह के भौतिक ताप हमारे ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। If we're smart enough and sensitive enough, we can perceive, yes, I'm in complete anxiety, fearful state of mind, and it's a horrible condition. तो
तो अगर हम थोड़े से बुद्धिमान हैं, थोड़े से समझ पा रहे चीजों को, हम देख पाएंगे कि ये तीन तरह के भौतिकता का इस पर प्रभाव। So if we have no spiritual shelter and protection, we're trying to protect ourselves, we'll be in a constant state of fearfulness, anxiety, and crisis management. जब हम इस चेतना में हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास कोई आध्यात्मिक रक्षण नहीं है, आश्रय नहीं है, तो कैसे हम अपनी सारी मुसीबतों का समाधान करेंगे, निरंतर अपनी समस्याओं का समाधान करने में लगे रहेंगे। So we'll never be peaceful and happy in that state of mind or consciousness. इस तरह के मन चेतना के स्तर में हम कभी भी शांत और सुखी नहीं रह सकते। So we should realize, oh, this fearfulness, this anxiety, this is because we're too much far away or not conscious of Krishna, or our the platform of eternal servant of Krishna and soul platform. There's too much bodily, animalistic identification, misidentification. तो अगर हम इस तरह की भय और चिंता में, इसका मतलब हम कृष्ण भावनामृत से काफी दूर हैं, काफी ज्यादा शरीर के स्तर में, इसलिए हम ये भय और चिंता के स्तर पे। I remember when I was first starting spiritual life, one person told me, your feelings are not facts. और मुझे याद है जब मैंने आध्यात्मिक जीवन शुरू किया, तो शुरुआत मुझे एक व्यक्ति ने आकर कहा कि आपकी भावनाएं जरूरी नहीं सच्चाई हैं। Just because you're feeling something, it doesn't make it a fact. जरूरी नहीं आप जो महसूस कर रहे हो वो सच्चाई है। Maya can make you feel very fearful and anxiety, and you think, oh, you're in a dangerous position, but it's not necessarily a fact. हो सकता है माया आपको ये महसूस कराए कि आप बहुत भय में हैं, बहुत चिंता में हैं, और किसी बहुत बड़े खतरे में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अनुभव असल में सच्चाई है। Especially if we are sincerely trying to hear and chant about Krishna, विशेष करके जब हम गंभीर रूप से कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करते हैं, in association of like-minded devotees who are trying to understand about Krishna and how to surrender to Krishna and how to become devotee of Krishna. एक ही मानसिकता वाले भक्तों के संग में जो खुद भी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण का भक्त बन सकते हैं, कैसे कृष्ण को शरणागत और उनकी सेवा कर सकते हैं। So if we are really convinced that that's our motivation, then why we should be fearful? तो अगर हम पूरे आश्वस्त हैं कि मेरी ये मानसिकता है, तो हमारे अंदर भय क्यों है? And even if you misunderstand something or not understanding something, then Krishna will help you to understand. हो सकता है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तो कृष्ण आपकी मदद करेंगे चीजों को समझने में। Just like if the child is doing something, right, mother, father, they're sincerely doing, but mother, father says, oh no, not understanding, right, or you're getting into some misconception, and the mother, father helps them to understand. जैसे कोई बच्चे कुछ एक निष्ठा से कुछ करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो माता पिता उनको गलती करते हुए देखते हैं, उनको कहते हैं नहीं जी आप सही तरीके से नहीं कर रहे, आपने कुछ गलत समझा, फिर वो सही तरीके से समझाने का प्रयास But करते हैं। if the child is like trying to cut some vegetable or something and they're doing it the wrong way, oh, they're doing it in a dangerous way that could get cut. Mother said, no, don't cut like that. जैसे बच्चा जो है सब्जी काटने का प्रयास करता है, लेकिन वो गलत तरीके से काट रहा होता है, वो खुद को काट सकता है, तो माँ कहती है नहीं ये तरीका गलत है, आप खुद को काट सकते हैं। Or you're trying to drill something or saw something with some, heavy duty equipment or something, then father, teacher might say, no, don't try to cut the wood like that. या फिर आप Dangerous way to cut it. या फिर आप कुछ ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ लकड़ी काटने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत भारी भरकम मशीनों से, तो पिताजी देखकर कहेंगे नहीं ये गलत तरीका है करने का, आप खतरे में हो सकते हैं। So if we have good shelter and protection by Krishna's mercy, then even if we're misunderstanding, then that also can be rectified. तो अगर हम कृष्ण के आश्रय रक्षण में हैं, हो सकता है हम कुछ गलत समझ रहे हैं, तो वो भी वो सुधार करने के लिए तैयार हो। So when Gurudev would say many things, then I said, oh, I never heard that before. गुरुदेव जब कई बातें कह रहे होते थे, तो मैं सोचता था ये बातें भी मैंने कभी सुनी नहीं। And then I was shown many times how that is there in Prabhupada's books and teachings, which I also never saw or heard anyone refer to before. और बाद में मुझे दिखाया कि बहुत सारी बातें जो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी, मौजूद थी जो मुझे किसी ने सिखाया नहीं। So that will happen as many times until Krishna 100% convinces you that he is making the spiritual master speak according to Prabhupada's books and teachings, according to Sadhu, Guru, Vaishnava. तो कृष्ण आपके साथ इतनी बार करेंगे कि आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि गुरु जो बता रहे हैं वो कृष्ण ने आपको बताया है, गुरु साधु शास्त्र के आधार पे। Then you would just accept it. और तब उसके बाद आप बस उनको स्वीकार करते हैं। And if you really think about what is Srimad Bhagavatam, it's different Vaishnavas
pure devotees of the Lord speaking and giving instructions from their heart through their mouth to someone else about the nature of pure devotional service. अगर आप श्रीमद् भागवत देखेंगे जो असल में क्या है जो शुद्ध वैष्णव वो दिखा रहे हैं कि शुद्ध भक्ति करने का माध्यम क्या है शुद्ध भक्ति के बारे में वो अपना साक्षात्कार लोगों को बता रहे हैं. So we're hearing the sadhu speaking, someone's hearing it, now we're hearing it, that's Srimad Bhagavatam. तो हम अगर श्रवण कर रहे हैं साधु की बातों को वो है श्रीमद् भागवत. But why is it accepted as something to be heard is because we know that this is Krishna's arrangement. लेकिन हमें क्यों इसको स्वीकार करना चाहिए श्रवण करना चाहिए क्योंकि ये पता है ये कृष्णा ने ये व्यवस्था. Therefore, one should hear, Prabhupada says, one should hear Krishna speaking through bona fide authorized parampara from Krishna. इसलिए श्री प्रभुपाद बताते हैं कि किसी को कृष्ण को श्रवण करना चाहिए प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से जब वो प्रकट होते हैं. So Srila Prabhupada said that if you're like Arjuna, you can directly hear from Krishna. श्री प्रभुपाद बताते हैं अगर आप अर्जुन के जैसे हैं तो आप सीधे सीधे कृष्ण को सुन पाएंगे. Otherwise, you have to hear from Arjuna, from the parampara, from Krishna, then that knowledge is also non-different from Krishna, and in that sense it's Krishna, but it's through pure via medium of Krishna parampara. और अगर आप वैसे नहीं हैं तो आपको अर्जुन के माध्यम से यानी कि परंपरा के माध्यम से श्रवण करना होगा जो वो भी कृष्णा से अभिन्न है क्योंकि वो भी कृष्ण परंपरा से. And it's the same exact message. और वो बिल्कुल एक समान संदेश. And if it's realized, then the effect of that hearing and on your consciousness and your understanding will also change. और अगर उसमें उनका साक्षात्कार है तो जब आप उसे श्रवण करेंगे आपके अंदर प्रभाव परिवर्तन लेकर आएगा चेतना शुद्ध होगी. Because someone may speak the right thing, but if it's just theoretical and they're not realized and it's not empowered, it's not authorized, then it may technically be the right information, but it won't have the necessary effect on your consciousness or your faith. हो सकता है कोई मौखिक स्तर पे बिल्कुल सही बातें करे लेकिन अगर उसके अंदर उनका साक्षात्कार नहीं है उनका सशक्तिकरण नहीं है उनको अधिकार प्राप्त नहीं है तो वो आपकी चेतना के अंदर वैसा प्रभाव नहीं कर पाएगा. So wherever it's coming from, that's the best that it can hit in you. तो ये जहाँ से आ रहा है वहाँ तक आपको पहुँच पाएगा. So if someone's speaking from a mental platform or an intellectual platform, the best they can do is hit your intellect and your mind. तो अगर कोई मन के स्तर से या बुद्धि के स्तर से बातें कर रहा है तो सबसे श्रेष्ठ या तो आपको मन तक या आपके बुद्धि तक पहुंचना. So then your intellect mind is okay. Technically, that's correct what you just said. तो आपका मन और बुद्धि आपको ये बताएगा कि तकनीकी रूप से इन्होंने जो बताया ये बातें सही. So basically, it went from a theoretical person to a theoretical you. तो मूल रूप से ये किसी मौखिक व्यक्ति से एक मौखिक आपके तक पहुंच पाएगा. But this information is meant for the soul. लेकिन ये जानकारी आत्मा के लिए not to get caught or lost in the intellectual, emotional, mental platform. कि आप अपने भावनाओं के स्तर पे मानसिक स्तर पे बुद्धि के स्तर पे फंसे ना रहें. It's like when you're eating, it's supposed to go to your stomach, but if you have some parasite, right, then it's not going to nourish you because the parasite is eating everything, right? तो जैसे कोई खाना है वो आपके पेट तक पहुंचना चाहिए लेकिन पेट में अगर कोई परजीवी है तो वो पेट तक पहुंचने के बजाय वो परजीवी खाता है. So submissive or reception means hearing from Krishna, which is the soul, super soul platform, and that food for the soul is meant for your soul. तो विनीत भाव से श्रवण का अर्थ है आत्मा के स्तर से कृष्ण से परमात्मा से श्रवण करना जो कि आपके आत्मा तक पहुंचेगा आपके आत्मा तक पहुंचना. So if we don't trust Krishna and we don't trust Krishna's arrangement through bona fide guru, purified medium of Krishna, then you cannot do submissive or reception. अगर आप कृष्ण में विश्वास नहीं करते और कृष्ण ने जो व्यवस्था बनाई है शुद्ध प्रमाणिक गुरु की तो आप विनीत भाव से श्रवण नहीं कर सकते. Because you put up your, false ego, so-called material intellect, mind and senses to protect you. क्योंकि आप अपना मिथ्या अहंकार अपनी बुद्धि अपनी इंद्रिय को लेकर आ रहे हैं अपने आप को बचाने. So we'll be skeptical, suspicious. तो हम बचने का प्रयास करेंगे हम संदेह करेंगे Cynical, हम doubtful, पाप पर करेंगे fearful. हम संदेह करेंगे. If all of those feelings, emotions, and thoughts are there, we cannot do submissive or reception. तो अगर ये सारी भावनाएं हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम विनीत भाव से श्रवण नहीं कर पाएंगे. Because we're too much trusting ourselves क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हैं instead of
completely trusting Krishna. इसके बजाय कृष्णा में पूर्ण विश्वास करने की That means when we're trying to protect ourselves, that we have not admitted defeat. इसका मतलब हम खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हमने अपनी हार अभी तक स्वीकार की We've not realized that we're completely, helpless condition. हमने अभी तक ये साक्षात्कार नहीं किया है कि हम पूरी तरह से असहाय स्थिति में हैं। And if we're just depending on ourselves and it's not effective and counter-effective, then it puts us in a hopeless condition. तो अगर हम खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका हमें कोई सही प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसका उल्टा विपरीत हमारे लिए प्रभाव दिख रहा है, तो ये हमें सही फल नहीं देगा। So that shravanam has to be done properly. तो ये श्रवण सही तरीके से करने की जरूरत है। Because even if you're hearing from proper source, if we don't understand and we don't do the shravanam, submissive reception properly, that will also not work. तो यहाँ हो सकता है हम सही स्रोत से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अगर हम विनीत भाव से सही तरीके से श्रवण न करें, तो ये भी काम नहीं आएगा। I didn't know I was going to be talking about this right now, मुझे पता नहीं था मैं इन विषयों पे बात करूँगा आज, but evidently this must be what we need to hear. लेकिन लगता है कि ये सुनने की जरूरत है। Because if the doctor has a great medicine but he can't get you to swallow it, then who cares about the doctor or the medicine, right? क्योंकि अगर डॉक्टर के पास बहुत अच्छी दवा है, लेकिन वो डॉक्टर आपके अंदर वो दवा डाल नहीं पा रहा, तो उस दवा या डॉक्टर का क्या होगा? So doctor has to be right, patient has to trust the doctor and the medicine must be potent, must be powerful. तो डॉक्टर को सही होना होगा, दवा सही होनी होगी, और मरीज को भी डॉक्टर में विश्वास होना रखना होगा और विनीत भाव से उस दवा को ग्रहण। Then what happens? Then you get well. और फिर क्या होगा? आप ठीक हो जाएंगे। You may not understand how the medicine works, हो सकता है कि समझ नहीं पाए कि दवा काम कैसे physiologically, biologically, chemically, शारीरिक तरीके से रसायन के तरीके से somehow or other. किसी तरीके से, लेकिन आप स्वस्थ हो जाएंगे। Later on, brother, so later on you can figure out how the medicines work. और हमें आप बाद में पता लगाना कि दवा कैसे काम So the Hari Katha, Krishna Nam is a medicine. तो हरि कथा कृष्ण नाम ये औषधि है। The transcendental sound vibration of Krishna is non-different from Krishna. और ये कृष्ण का नाम, दिव्य नाम, ये कृष्ण से अभिन्न है। So unless one is bona fide, authorized, empowered from Krishna, from Mahaprabhu's parampara, Krishna will not manifest in that Katha. तो जब तक कोई कृष्ण महाप्रभु परंपरा से प्रमाणित अधिकार से शक्तिकरण प्राप्त नहीं होता, कृष्ण उसका नाम We can act like guru and speak some philosophy, तो सभी कोई गुरु की तरह दिखावा कर सकते हैं, कुछ अच्छे से शास्त्र बातें कर सकते हैं, but it doesn't mean Krishna is going to agree to come, to show up there. लेकिन ये जरूरी नहीं कि कृष्ण वहाँ सहमत होंगे वहाँ प्रकट होने के लिए। My Guru said, then you're just like firing the gun with no bullets. It's like a blank fire. तो मेरे गुरु कहा करते थे, फिर आप गोली चला रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बंदूक नहीं, खाली बंदूक। So you fire, then it's like a big boom, तो आपने बंदूक चलाई, धमाका fire, smoke, बड़ा आग निकली, चिंगारी निकली, big धुआं निकला, movement of your arm, पूरा हाथ झटक गया, but no bullet. लेकिन कोई गोली नहीं। So that's what it means to be empowered. तो ये होता है सशक्तिकरण का मतलब। So when you figure out that you're not really empowered, and Krishna's not showing up, then you come with bridge preaching concoction. जब आप पता लगा पाते हैं कि आपको सशक्तिकरण नहीं मिला है कृष्ण की द्वारा से, आपके बंदूक की गोली नहीं है, तो आपको ये ब्रीच प्रीचिंग Connecting you to the process. मैं आपको प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास करता हूँ। And just have faith that the process is going to get you there. और बस ये विश्वास रखिए कि ये प्रक्रिया आपको वहाँ तक लेकर जाएगी। Anyway, I don't want to get too diverted on that. I already made that clear. लेकिन मैं उससे ज़्यादा मुड़ना नहीं चाहता। But that's what the demons do. They try to make a different way, a different process. लेकिन असल ये करते हैं, वो एक दूसरा तरीका, दूसरा प्रक्रिया They want to replace Krishna. वो कृष्ण के जगह को बदलना चाहते हैं। They want to imitate Krishna devotees. कृष्ण के भक्तों की नकल करना चाहते हैं। It's all based on enviousness. ये सब द्वेष पे आधारित है। Therefore, it's not bona fide, not authorized, not empowered. तो इसलिए प्रमाणिक नहीं है, आधिकारिक नहीं है, सही नहीं है, And you सशक्तिकरण get प्राप्त the है। opposite result. और वहाँ आपको उल्टा प्रभाव करना। So it's coming from Krishna, then it means it's meant for you, the soul.
तो अगर ये कृष्णा से आ रहा है तो ये आपके लिए है, नहीं कि आपकी आत्मा के लिए। So it says that Krishna is the speaker of the तो Bhagavatam. कहते हैं कृष्णा भागवतम के प्रवक्ता है। So when we hear submissive or reception Srimad Bhagavatam, if it is authorized and empowered coming from Krishna, then we should be able to perceive it from the soul platform, and we'll see in the effects of that hearing the difference in the effects of hearing from one personality or hearing from other personality. जो हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं और अगर कृष्णा और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं तो वहाँ श्रवण करके हमारे अंदर हमारी आत्मा तक पहुँचना चाहिए, हमें वो लाभ दिखना चाहिए, तब हम पता लगा पाएंगे कौन व्यक्ति प्रमाणित है। That's what it means to judge by the result. अब यही कहते हैं कि कैसे आप फल के आधार पे And now by recognizing who is bona fide guru, it's by the ear. तो बताया है कि आप गुरु को पहचान सकते हैं अपने कानों के माध्यम से। So it's just okay, I'm hearing, but I don't see any difference. आप कह सकते हैं मैं श्रवण कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। Then what is the quality of our hearing? तो हमारे श्रवण में क्या गुण की बात Are we really doing submissive or reception? क्या हम असल में विनीत भाव से श्रवण Are कर we रहे हैं? really trusting क्या Krishna? हम असल में कृष्ण में विश्वास कर रहे हैं? And then are we really hearing, has Krishna given us intelligence and faith, who to do submissive or reception? और क्या कृष्ण ने हमें पर्याप्त बुद्धि दी है, श्रद्धा दी है कि किसके पास जाके आपको विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए? Right? Doesn't it say you, without intelligence and faith, then you can't understand who is bona fide guru in Krishna Prabhupada. ऐसा कहते हैं कि बुद्धि और श्रद्धा के बिना आप ये नहीं समझ सकते कि कौन है प्रमाणिक गुरु का। My Gurudev said that you'll not understand who really is Krishna's own man. मेरे गुरुदेव कहा करते हैं कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि कृष्ण के खुद के व्यक्ति कौन हैं। Because everyone is talking, all the different gurus saying Krishna, Krishna, Krishna. कि बहुत सारे गुरु सभी कृष्ण 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 बोलते So हैं। apparently it's all the same. तो बाहरी से सभी एक जैसे हैं। So this is a very, very subtle science of hearing. तो ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, श्रवण का विज्ञान। And who are we hearing from? जिससे श्रवण कर रहे हैं And what is the effect of that hearing? और उस श्रवण का क्या प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। Anyway, this is like big topics. ये बहुत बड़े-बड़े विषय हैं। But you have to give faith and intelligence so that the person may trust that who you are and what you're saying and what medicine you're trying to give. Otherwise, why will they even consider to do submissive or reception? तो आपको श्रद्धा देनी होगी, विश्वास देनी होगी कि आप क्या बातें बता रहे हैं उनको, वरना क्यों वो आपकी बातों पे श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे या विनीत भाव से श्रवण So करेंगे। that false ego platform will block us from receiving that information. तो ये मिथ्या अहंकार का स्तर हमें रोक कर रखेगा, विनीत भाव से श्रवण नहीं करने के लिए। So I saw that when my Gurudev would say many things I never heard before. Always, it would somehow or other come out that it's in Prabhupada's books and teachings. तो जब भी मैं ऐसा मेरी गुरुदेव से उनकी बातें सुनता था जो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी, अक्सर वो श्री प्रभुपाद की किताबों में बातें सुनता था। So if I heard something, I would say, okay, it's there, I just didn't see it yet. तो जब बाद में सुनने लगा तो मैंने हो सकता बाद में मैंने स्वीकार कर लिया, हो सकता है ये किताब में मौजूद है लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं। Eventually, you'll get to that point. तो धीरे-धीरे आप ही इस स्थिति तक पहुंचे। And then many times he would just say, oh, it's right here, and then he would point you where it is. और कई बार वो कहते थे कि ये बिल्कुल यहाँ मौजूद है, आपको दिखा देते थे कि And यहाँ। another time when you're studying, reading at night or something next day, all of a sudden it'll come out and you say, oh, there's that one. या फिर आप रात के समय कुछ पढ़ रहे हो या अगले दिन आप कुछ पढ़ रहे हो तो फिर वो बात आपके सामने आ जाती है, तब आपको पुष्टिकरण मिल जाता है। So be patient, trust Krishna, कृष्ण में विश्वास कीजिए। and then if some things sound confusing, even opposite sometimes, तो हो सकता है कुछ चीजें जो आपको भ्रमित करें या कई बार ऐसे लगे जो बिल्कुल उल्टी बातें कर रही then we हैं। have to even more depend on Krishna and Guru, how to understand it properly and to reconcile it. How all those things fit together. तो हम फिर से और ज्यादा गुरु के ऊपर और कृष्ण के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है कि कैसे ये सारी बातें एक साथ With Krishna, everything fits together. तो कृष्ण सारी चीजों को एक साथ It's a फिट करता perfect, complete system. है। ये पूर्ण व्यवस्था है। Prabhupada said if there's some problem, imperfection, it's only in your mind and your understanding. बात कहते हैं अगर कोई अपूर्णता है तो ये आपके मन में, आपके इंद्रिय में। Someone asked Prabhupada, why is it Krishna, if God is perfect,
then why do we see so much imperfection in the world? And Prabhupada said, because you've created that imperfection. By not following the system, Krishna science, then we've created a mess for ourselves. Everything is mismanaged. And by not understanding the science, we've created a mess for ourselves in our own minds and in our own self. हम इस विज्ञान को नहीं समझकर उनके जीवन में उनके मन में अव्यवस्था फैला कर रखे और बाहर भी अव्यवस्था. My Guru many times said, if you don't understand something, that's all right. By mercy of Guru Krishna Shastra, you can come to understand it. मेरे गुरुदेव ने एक बार कहा, अगर आप कुछ चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. गुरु और कृष्ण की कृपा से आप उसे चीजें समझ सकते हैं. But don't misunderstand it. लेकिन कुछ गलत मत समझो. So if you misunderstand it, it will create chaos and havoc or destruction in your life. अगर आप गलत समझ बैठेंगे तो ये आपके जीवन में उथल-पुथल मचा देगा और तबाही मचा देगा. That's why we have to be very careful इसलिए हमें बहुत in understanding the science and applying the science. इस विज्ञान को समझने के लिए और इस विज्ञान को लागू करने के लिए. Otherwise, we'll misunderstand, वरना हम गलत समझ बैठेंगे. take it in opposite way. या हम उल्टे It तरीके can be reconciled, but we didn't wait for it to be reconciled. तो इसको एक जगह एकत्र किया जा सकता है, लेकिन हमने इंतजार नहीं किया. Use it as some doubt. तो हमने उस संदेह का इस्तेमाल किया. Now doubts are like demons. और संदेह जो है वो असुरों के जैसे. And therefore now we're listening to the demons of doubt, and that will create a havoc, chaos, and destruction in our life. हम इस तरह के संदेहों को असुरों को सुनते रहते हैं, तो ये हमारे जीवन में पूरी तरह तबाही लेकर आता है. I asked if you had a class this morning or if you went on Harinam. मैंने पूछा कि आज सुबह आप लोग कहीं क्लास अपनी किया या हरिनाम के लिए आप लोग कहीं गए थे? Because otherwise you would have been too tired for this class. क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस क्लास के लिए आप लोग काफी ज्यादा थक गए होते. Can you imagine if you already listened to a class for 2 hours or you went on 2-hour Harinam? How would you have the strength to listen to all of this? तो अगर आप 2 घंटे सुबह क्लास करते हैं, फिर आप हरिनाम के लिए जाते हैं, फिर आप दोबारा यहाँ आते सुनने के लिए, तो आपके पास शक्ति नहीं होती है. Now we just have to get you out of the heaviness of the breakfast. अभी जो है आप लोग जितना भारी महसूस कर रहे हैं नाश्ता करके, उससे आपका सब यहाँ पे वो बाहर नहीं. Prabhupada said, break fast, not break head. ब्रेकफास्ट करना है, Yeah, so you're eating so much now you broke your head. इतना ज़्यादा खाली रखिए. It's supposed to be breaking fast. उपवास को तोड़ना. So now this is the next challenge. ये आप एटलीस्ट Hare Krishna. Okay, now we'll discuss the class. अब हमारा क्लास शुरू करेंगे. Do you have any appointment? किसी के पास कोई अपॉइंटमेंट है? Sure? All right, let's discuss something. चलिए हम कुछ चर्चा करते हैं. Hare Krishna. This is what I want to talk about. This chanting sounds beautiful, doesn't it? इसके बारे में बात Yeah, let's talk about this for some. This is another thing I was thinking. के बारे में बात करते हैं. I want to express myself. मैं थोड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ. I want to talk about this. इसके बारे में किसी बात करेंगे. We're not in a hurry, right? We have a couple months. We can talk about Yes. हमारी कोई जल्दीबाजी नहीं है. हमारे पास बहुत महीने हैं. it. So this chanting sounds very beautiful. तो ये कीर्तन सुनने में बहुत सुंदर है. Especially in West Bengal. पश्चिम बंगाल में They chant very, very beautifully. बहुत ही सुंदर तरीके से कीर्तन करते हैं. And then when I hear the chanting and everything is off key and it's all not very sweet, I say, these people are not from West Bengal. Immediately I know. कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं और कोई लोग गलत तरीके से बजा रहे हैं, तो मैं समझ जाता हूँ ये लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं. Just by the sound vibration. बस केवल ये शब्द जानते हैं. So that's, the advantage of having a body from West Bengal. You can have the potential of chanting beautifully, sweetly. पश्चिम बंगाल के अंदर शरीर प्राप्त हुआ है, तो आपके अंदर अपने आप ये शक्ति होती है कि आप अच्छा कीर्तन कर सकते हैं. Do you notice that? I remember when I went to Orissa the first time and I heard them chanting, I was like horrified because I thought it was going to be like in the Mayapur.
तो जब मैं सिलसिला में था मैंने मायापुर में जब कीर्तन करते हुए सुना मुझे लगा मायापुर में भी ऐसा ही कीर्तन होता होगा। I wouldn't say horrified, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत डर गया था। but it was all off key, you know, it was not in the right key. सभी लोग जो है गलत चीजें तरीके से बजाते It wasn't smooth. एकदम It wasn't like enjoyable. उसका आनंद नहीं ले सकते। I had to work hard to get the spiritual benefit from the chant. मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी वहाँ से किसी तरह का आध्यात्मिक लाभ निकालने में उस कीर्तन में से। Then I had to understand, okay, there can be sweet music, right, from a material point of view, but it doesn't necessarily mean advancement or pure bhakti or connection to Krishna Parampara. हो सकता है बाहर से कोई मधुर संगीत सुनाई दे लेकिन जरूरी नहीं है वो कृष्ण परंपरा या भक्ति से उन्हें कोई लेना है। I remember when my Gurudev, when we would go to Gadigiri, they came from, Gurudev came from a family, they were like professional kirtaniyas. मुझे याद है जब गायगिरी गए थे मेरे गुरुदेव से वहाँ पे वो लोग पेशेवर कीर्तन हैं। One Vaishnava family, they had generations of expert kirtan players. वैष्णव परिवार है तो जन्म से वो कीर्तनिया And their name is even written in the register in Jagannath Puri. That anytime these people come, they should be allowed to chant in the temple. और जगन्नाथपुरी के रजिस्टर में उनके परिवार का नाम लिखा है कि जब भी जगन्नाथपुरी में आएंगे तो उनको पूरी अनुमति दी जाएगी जगन्नाथपुरी कीर्तन। And many times we went there with Gurudev to hear the chanting party. और कई बार हम गुरुदेव के साथ वहाँ गए थे उस कीर्तन पार्टी में। And sometimes they would also come to Bhubaneswar और कभी-कभी वो पार्टी में or Rath Yatra, the festival. रथ यात्रा में या अन्य दूसरे So they were an expert. पूरे पेशेवर And it was very beautiful बहुत ही सुंदर and very, you know, from musical point of view, very expert. तो संगीत के दृष्टिकोण से बहुत ही निपुण थे। And my Gurudev would relish everything because this is his family, this is how he was raised in that village, so you could see Gurudev was enjoying everything. हम देखते हैं गुरुदेव को बहुत आनंद आता था क्योंकि गुरुदेव का परिवार है गुरुदेव ने कीर्तन ध्यान से सुना था तो वो उस आनंद में थे। Then we'd come back to Bhubaneswar, फिर हम भुवनेश्वर वापस आए। and then Gurudev would start making fun of them. Because they would do all these tricks, you know, with the madanga, and just you know, like it's like a nice performance, you know. So it can be very tricky because materially it sounds nice and sweet and even devotional. तो भौतिक दृष्टिकोण से ये बहुत मधुर भक्ति में जैसा देखने में लगता है। So you may say, oh, let me do submissive vow reception. तो फिर आप सोचेंगे कि मैं जाकर विनीत भाव से श्रवण करूँगा। Right? But the heart and mind of that person may be completely materialistic. लेकिन उस व्यक्ति का हृदय या मन हो सकता है पूरी तरीके से भौतिकतावादी हो। They may sound humble, they may sound like Buddhist separation, they may sound like they, you know, fully understand the tattvas of the songs that they're singing. They may be bona fide authorized songs in Vaishnava, parampara. तो हो सकता है वो जो गीत गा रहे हैं वो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा के गीत हो और देखने में ऐसा लगता हो उनके अंदर पूरा गोपी का विरह का भाव है और वो सारे तत्वों को उन्होंने साक्षात्कार किया है। But it doesn't necessarily mean that it is authorized. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारा प्रामाणिक हो Or bona fide. या अधिकारिक Or empowered. या सशक्तिकरण। So when I was thinking about to give this class, it was so loud. I was like, oh, I have to compete against that, you know. जब मैं क्लास लेने गया तो कीर्तन इतना जोरदार हो रहा था तो मुझे लगा मुझे इन लोगों के साथ प्रतियोगिता करनी है क्लास देनी है। And then I was thinking about all of these things about Gadigiri and hearing professional singers, and it sounds very, very nice, very attractive. और फिर मैं सोचा कि जो गायगिरी के पेशेवर कीर्तनिया थे वो सुनने में बहुत पेशेवर अच्छे लगते थे। So I'm not necessarily judging this person because I don't know that person. तो मैं जरूरी नहीं उस व्यक्ति को मैं उसके ऊपर मैं कुछ निर्णय ले रहा हूँ क्योंकि मैं व्यक्ति को जानता हूँ। So that would not be fair of me to sit over here and, you know, be the witness and the judge of his faith or
his advancement, or whether it's bona fide or not, authorized or not, you cannot do that also. और ये सही नहीं होगा कि अगर हम यहाँ बैठकर उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी गंभीरता पे उसी तरह का सवाल उठाएं. You would have to see what is their line, what is their parampara, who have they heard from, who have they listened to, and what are they saying from Guru Sarva Shastra point of view. You would have to take all of that into consideration, the effects of their presentation scientifically, in order to whether you should accept it as bona fide, authorized, empowered or not. तो आपको ये समझना होगा कि उनकी प्रस्तुति से आपके अंदर क्या प्रभाव हो रहा है, वो क्या प्रमाणिक परंपरा के माध्यम से उन्होंने इनसे श्रवण किया है, क्या उन्होंने सबका साक्षात्कार किया है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय कर सकते हैं. I think what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if someone offers you some gold, you should find out which mind did it come from. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बात कही है कि अगर आप कोई सोना ला कर देता है तो आपको ये प्रश्न उठाना चाहिए कि कौन से सोने की खान से ये सोना लाया गया. So who did they hear from? उन्होंने किससे श्रवण किया है. So if the previous acharyas are bona fide authorized representatives of the parampara, that's really who we can do submissive all reception to. तो पूर्व आचार्य या प्रमाणिक आचार्य जो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं केवल हम उनसे श्रवण किया सकते हैं. Now the question is, everyone says they're parampara, everyone says they're guru, everybody says they have some philosophy in kirtan you should do submissive all reception to. That's why Krishna's merciful intelligence and faith is required. तो अब सब प्रश्न ये सभी लोग कहते हैं कि वो गुरु परंपरा में है और वो पेशेवर कीर्तनिया है और कीर्तन करते तो आपको उनसे विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए कि कृष्ण की कृपा और बुद्धि आपको जरूरी है ये जानने के लिए. Yeah, so I wanted to talk about that one. के बारे में Because if you don't know much, you could easily be persuaded. Oh, let's go listen to this Babaji or this Maharaj, or right? अगर आप जानते नहीं हैं तो आप बहुत आसानी से प्रभावित हो जाएंगे कि इस बाबा जी या महाराज जी These सुनने people जाते don't know how to हैं. play, cartels, and they don't even know how to speak the language, and right. So you may say, okay, how was this bona fide, authorized, or empowered? कि इनको हमसे करताल बजाना नहीं आता है, हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, तो कैसे ये प्रमाणिक आधिकारिक या सही ढंग से हो सकता है. So it's very easy to misunderstand that also. बहुत आसान हो जाएगा सारी चीजों को गलत समझ बैठना. So any questions, points? कोई प्रश्न या कोई बात? Yes. You are telling that Krishna's intelligence is required so that we can understand is this really bona fide, is this really Krishna appearing there? Yes, we have to be completely dependent on Krishna to give us intelligence and faith of who is actually bona fide and authorized in Krishna's parampara. वो सवाल पूछ रहे हैं हमें कृष्णा की कृपा से हम बुद्धि मिलनी चाहिए, हम समझ पाएंगे कि कौन सही व्यक्ति है या नहीं. जहाँ कृष्ण कि आपको कृष्णा की कृपा के ऊपर निर्भर होना होगा बुद्धि और श्रद्धा पाने के लिए. So I want to understand that you are saying that Gaura Goswami he used to enjoy the kirtaniyas of his family members. He used to enjoy the kirtans, and then he used to again come to Bhubaneswar and speak something opposite, you said like he used to make fun. So I didn't understand. I'm not talking about Srila Govinda Swami. I'm talking about just some of the brahmacharis and many of the devotees chanting there. Externally, they were not as kind of musically beautiful type of musical presentation. तो पूछने की जैसे आपने बताया कि श्री गौरव महाराज गढ़ाईगिरी में जाते थे तो वो कीर्तन का ऐसे आनंद ले रहे थे, भुवनेश्वर के बूम की भुगाएं निकाल रहे थे. तो गुरुदेव सोचते थे कि मैं श्री गौरव महाराज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. कुछ ब्रह्मचारी थे जो वहाँ पे बाहर पेशेवर तरीके से वो कीर्तन नहीं करते थे. So then, we can be just, trying to hear materially, from a material point of view, just enjoying it from a materialistic point of view. तो हम भौतिक दृष्टिकोण से उसको देख सकते हैं, भोग के उसको आनंद लेने का प्रयास कर सकते हैं. But it may be poisonous. लेकिन वो एक विष की तरह हो सकता है.
Because what is the heart and mind and consciousness of the person who's singing? That is also being delivered. Right. Someone else, from external material point of view, may not be singing so beautifully or sweetly, but they're actually presenting, you know, a pure understanding and faith and realization from Krishna. कि हो सकता है कोई बाहरी रूप से उतना मीठा मधुर या निपुण तरीके से नहीं कर रहा हो, लेकिन उनकी जो समझ है, उनकी जो श्रद्धा है, शुद्ध है। I'm reminded of the past time of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, when he was in the kirtan and his devotees were chanting so sweetly, so beautifully. मुझे एक कहानी याद है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य बहुत ही मधुर मीठे तरीके से कीर्तन कर रहे हैं। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur on purpose started playing the kartals exactly opposite. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जानबूझकर करताल गाना शुरू किया, बिल्कुल उल्टी धुन में। And they were getting disturbed. Oh, I heard they was doing like this. Because he would, you know, he was trying to say this is not about an external presentation. You're doing it for your ego platform, to be recognized or appreciated, or you're just trying to enjoy materially. This is not the purpose of the kirtan. तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि आप इसको केवल अपने अहंकार के स्तर पे किस उद्देश्य से अपने नाम या अपनी प्रतिष्ठा के लिए आप करना चाहते हैं। Because if you're puffed up and you're like, oh, I have a sweet voice and oh, I'm doing nice kirtan, everyone's appreciating, enjoying, right? That's not bhakti, that's not pure bhakti. क्योंकि अगर आप अहंकारी हैं, आप सोचते हैं आपकी आवाज बहुत मीठी है, मधुर है, सभी आपकी सराहना कर रहे हैं और आप उससे खुश हो रहे हैं, आप उसका भोग कर रहे हैं, उसका सुन के आनंद ले रहे हैं, तो ये भक्ति है। So that's the point. I remember one time in Orissa, they had one party came to one program, and they were doing like kind of like almost like a Ras Leela type of dancing, and they're all crying, and they're moving around in a mood of separation, and it's like you really like, wow, it made you feel like, wow, this is, you know, is this real? Are these people really advanced? Are they really in this type of mood, right? It was really like influential. And they're like, no, they're just some professional party that they invited to come. They're like actors, you know, just performers. But it was so believable. मैंने देखा एक बार कि उड़ीसा में एक पार्टी आई जो अपना कुछ प्रदर्शन कर रहे थे कि देखने में ऐसा लग रहा था वो रासलीला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गोपी के प्रभाव में हैं, रो रहे हैं और इतना अच्छा इसका प्रदर्शन कर रहे थे कि बाहरी रूप से देखने में बहुत असली लग रहा था, बाद में पता चला ये केवल पेशेवर नाटक था। So it's just like, you know, if you watch some show, some movie, right? You're sitting there crying, everybody's crying because they're expert performers, they're expert actors and actresses. केवल आप टीवी में देखेंगे, मूवी में देखेंगे कि लोग उसको बैठ के देख के रोना शुरू करते हैं क्योंकि वो बहुत पेशेवर निपुण कलाकार हैं। So they know how to do this type of emotional manipulation. उनको पता है कैसे भावुक तरीके से लोग प्रभावित किया जाता है। But it's not reality. लेकिन वो सच्चाई नहीं है। That's why it's very dangerous, because you see emotionally you're affected and it sounds good and you're enjoying, right? But it may be poison, it may not be pure devotional service. इसीलिए ये बहुत खतरनाक है कि भावुक स्तर पे आपको बहुत अच्छा लगने लगा है, आपको मधुर लगने लगा, आप उसका आनंद लेना शुरू कर रहे हैं, लेकिन असल में वो विष हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। Does that answer your question? आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? I had one thing. I would also like to know in this thing now, because we stay in Mayapur. There are many kirtans going on everywhere. Wherever you go, some kind of kirtan is going on. So if that is like, we don't know is it bona fide or not. So how do we like shield ourselves? Find out whether the person heard the right, and not only heard, but who has been accepted in Krishna Mahaprabhu's parampara, and what have they received and heard and realized in that parampara. That's who you should hear from. तो
तो प्रभु पूछ रहे हैं कि हम मायापुर में रहते हैं और यहाँ बहुत सारे अलग अलग जगह पे लोग कीर्तन निकले हैं, तो क्या आप कैसे अपने आप को उससे बचा सकते हैं? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, आप ये बहुत सरल तरीका, आप ये पता लगाने का प्रयास करो, उन्होंने जिनसे श्रवण किया, बस केवल श्रवण ही नहीं कि प्रमाणिक परंपरा, महापुरुष परंपरा के माध्यम से उन्हें क्या प्राप्त किया, क्या श्रवण किया, क्या साक्षात्कार किया, केवल आप उनसे श्रवण करें। Especially if you're not, intelligent enough and experienced, realized enough to know the difference. विशेष करके जब आप बुद्धिमान नहीं हैं, इतने आपको अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, कैसे आप दोनों के बीच भेद पता लगा सकते हैं? Then it's a dangerous situation. बहुत ही खतरनाक स्थिति है। Because you may do submissive all reception, but in the wrong place from the wrong person. हो सकता है विनीत भाव से श्रवण करना, लेकिन गलत व्यक्ति के पास और गलत जगह। Because it feels good, it sounds good, it's emotionally effective, right? So you think, oh, this is spiritual. क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, आपकी भावनाओं को बहुत प्रभावित कर रहा है, तो सुनने में बहुत आध्यात्मिक है। So it's more dangerous. ये ज़्यादा खतरनाक है। And someone who's qualified and matured and has experience, they can understand, okay, this is a material, professional presentation. They're not giving their heart and their soul and doing submissive all reception from these people because they understand, who and what is the consciousness and motivation of the people who are speaking or singing. जो लोग योग्य हैं, जो पूर्ण परिपक्व हैं, वो समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति किस स्तर से गा रहे हैं, उनकी चेतना क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, भाव क्या है, वो अपना पूरा हृदय, पूरा मन उसके अंदर लगा पा रहे हैं, साक्षात्कार लगा रहे हैं, तो वो उसको समझ पाते हैं और उसको वहाँ विनीत भाव से वो श्रवण नहीं करते हैं। You'll be able to understand what is what. आप ये समझ पाते हैं कि क्या क्या है, What's the difference? क्या अंतर है, What is the effects of the difference? और आपके अंदर कैसा प्रभाव हो रहा है, तो अंतर आप कर पाएंगे। And until you're mature and experienced enough in realizing that, it's better just to stay protected in association of people who have heard properly in the parampara and who are presenting that in according to Guru Sala Shastra in a protective and authorized way. That's the best way to protect yourself. तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है अपने आप को बचाए रखने का। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, पर्याप्त अनुभव नहीं है, योग्यता नहीं है, तो जिन जगहों पे परंपरा में उन्होंने सही तरीके से श्रवण किया है, अनुभव किया है, उनके आश्रय में रक्षक है, उनके संग में। I remember one time I asked Srila Govinda Swami, what about this Maharaj, big Maharaj and other Math? तो एक बार मैंने श्री गोविंद महाराज से एक दूसरे महाराज के बारे में सवाल पूछा जो एक दूसरे मठ से थे। And Srila Gurudev, my Guru Maharaj, he said, he has some knowledge. मेरे गुरुदेव ने कहा उनके पास कुछ ज्ञान है। And I was amazed at that response. He said, oh, he has some knowledge. मैं चौंक गया उनकी इस प्रतिक्रिया से। मैंने कहा इनके पास कुछ ज्ञान है। So they may have more knowledge, तो हो सकता है उनके पास ज़्यादा ज्ञान है, but they're not authorized. लेकिन वो अधिकार प्राप्त। Better you stay in ISKCON and hear and author. Through his authorized representatives of his own parampara. और केवल कृष्ण अपने आधिकारिक परंपरा के माध्यम से बातें करते हैं। That's where Krishna will manifest. और वहीं पे केवल कृष्ण प्रकट होते हैं। So now it's okay, who is really Krishna's own man? Who is really Krishna authorized to his parampara? That's the only question you should be left with. तो केवल अब प्रश्न यही है कि कृष्ण ने किनको अधिकार दिया उनके परंपरा में, किनको प्रमाणिक आधिकारिक व्यक्ति बनाया। And if that's the only place Krishna is going to manifest, then our only prayer will be, well, Krishna, can you give me intelligence and faith to understand who are these people? Who is he? Where are you manifesting and speaking? तो अगर कृष्ण ने कहा कि वहीं पे वो प्रकट होते हैं, वहीं से वो बातें करते हैं, तो प्रश्न यही है कि कृष्ण हमें कैसे वो बुद्धि और श्रद्धा देंगे, इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि वो This is the mystery of disciplic succession. बात बताते हैं ये परंपरा का रहस्य है। Everyone's saying they're guru, everybody's in the parampara, right? How are you going to know? सभी लोग कह रहे हैं वो परंपरा है, गुरु है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा?
That's why it can be very bewildering. इसीलिए बहुत भ्रमित करना That's why Prabhupada said that's why you have to trust Krishna that he will give you intelligence and faith to understand it because it's beyond subtle. और इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि आपको कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना होगा, आपको बुद्धि और श्रद्धा देने के लिए, क्योंकि ये सूक्ष्म से भी है। Srila Bhaktivinoda Thakur, he says in, I think Chaitanya Shikshamrita, that that mixed bhakti is the greatest enemy of Shuddha bhakti. श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है कि मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति की सबसे बड़ा So mixed bhakti, which is going on in the name of pure bhakti, तो मिश्रित भक्ति जो शुद्ध भक्ति के नाम पे चलता है is the greatest enemy of pure bhakti. ये सबसे बड़ी शत्रु है शुद्ध भक्ति Because for most people, you will not see that distinction. You will not understand the difference. क्योंकि ज्यादातर लोग उनके बीच का अंतर देखना नहीं चाहते। So these two poisons, karma, jnana, right? It's mixed in there. तो ये दो तरह के चीजें हैं, कर्म और ज्ञान। That's what's making it mixed bhakti. और यही इसलिए मिश्रित भक्ति बना But if it's being presented as pure bhakti, लेकिन अगर इसे शुद्ध भक्ति के रूप में दिखाया जाता है how's anyone going to understand that? तो कैसे लोग इसको समझ पाएंगे? Because externally it all looks more or less exactly the same. ये बाहर से एग्जाम में ज्यादा बिल्कुल एक समान लगता है। That's why we have to depend on Krishna और इसीलिए हमें कृष्ण के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। for that intelligence and faith to understand it. इस बुद्धि और श्रद्धा ताकि हम समझ पाएं। Does that make sense? And then you have the chairman of the GBC saying, why are you telling people to depend on the super soul? We don't care about the super soul. और GBC के चेयरमैन ये बात कर रहे हैं आप लोगों को क्यों सिखा रहे हैं आपको कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए परमात्मा के ऊपर हमें परमात्मा से कोई लेना नहीं। Krishna says, I am the super soul. कृष्ण कहते हैं मैं ही परमात्मा हूँ। I'm in the heart of every living entity. From me comes knowledge, intelligence, and remembrance. मैं सभी चीजों के हृदय में स्थित हूँ मुझसे ज्ञान बुद्धि और स्मरण शक्ति। So you're not directing people to Krishna in their own art and intelligence. Where are they going to get intelligence and faith from? अगर आप कृष्ण की तरफ उनको मार्गदर्शन नहीं कर रहे जहाँ से उनको बुद्धि और स्मरण शक्ति और श्रद्धा मिलने वाली है तो इसके अलावा उन्हें ये कहाँ से मिल पाएगा? Srila Prabhupada says you don't have to go any farther than your own heart to find the Supreme Personality of Godhead. श्रील प्रभुपाद बताते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए अपने हृदय से दूर नहीं जाने की जरूरत है। Prabhupada says if that person doesn't have a relationship with the super soul, he cannot be a bona fide spiritual master. प्रभुपाद ने कहा है अगर किसी व्यक्ति का परमात्मा के साथ संबंध नहीं है तो वो गुरु नहीं हो सकता। Otherwise, how you're pure by your medium of someone you don't know? So you have to realize and have a relationship in full dependence on the super soul, on Krishna as Paramatma. Prabhupada says, otherwise you cannot be a bona fide guru. So one Maharaj was, he writes books on Diksha Shiksha Guru. So he's telling, you don't have to be liberated, you don't have to be on this platform to be a guru. Even though Prabhupada is saying you have to be on that platform to be a guru. So I said, all right, I'm going to ask this Maharaj a question. He's like the authority in ISKCON on Diksha Shiksha Guru. He's writing books on the topic. And he's trying to say this in Bhubaneswar. I said, you're not coming here talking this nonsense. I said, okay, I'm going to ask him a question and expose this person. So I said, Maharaj, if the disciple goes to the type of guru that you're talking about, he's not liberated, he doesn't have, doesn't have to be on this type of platform. If the disciple asks the guru, what
does Krishna want me to do? Where do you get the answer to tell that disciple? I said, where exactly are you getting the answer to tell to that disciple? मैंने उनके महाराज से सवाल पूछा कि अगर कोई शिष्य ऐसे जो गुरु आपने बताया जो मुक्त स्तर पे नहीं है और उसकी स्थिति योग्यता नहीं है उनको सवाल पूछता है कि कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं तो वो गुरु कहाँ से उत्तर देगा? And he was stunned by the question. It's like I hit him with like a right hook, you know. और उनके रह गए कुछ कर नहीं पाए ऐसा लगा जैसे मुझे काम आ गया. So he a little hesitated, then he said, well, how do they say? Yes, the guru will tell him, and sometimes he gets it right and sometimes he gets it wrong. थोड़ा हिचकते हुए कहने का उन्होंने प्रयास किया कि कभी-कभी गुरु सही बता सकते हैं कभी वो गलत बता सकते हैं. But if he gets it wrong, he's saying like this, but if he gets it wrong, फिर वैसा कहते हैं लेकिन गुरु ने अगर आपको गलत बता दिया you have no right to complain to that guru. तो आपका कोई अधिकार नहीं है उस गुरु के प्रति शिकायत करने की. Because at least he was trying to help you. कम से कम वो आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं. I was stunned by this answer. मैं इस बात से चौंक गया. So basically, you're going to speculate something. तो आप कुछ मतलब इसका कहने का मतलब ये आप कुछ And मनोरंजन of course, करेंगे. any speculation, the whole thing is faulty. It's coming from Maya, right? मनोरंजन का मतलब है वो माया से आ रही है सब कुछ उसमें गलत है. So nothing's correct. तो कुछ भी उसमें सही नहीं है. If you're speculating, right, nothing's correct. Nothing's coming from Krishna. अगर आप मनोधर्म कर रहे हैं इसका मतलब कुछ भी सही नहीं है कुछ भी कृष्ण से नहीं है. But anyway, okay, sometimes he gets it right. I say none of it is right. But she's saying sometimes he gets it right, sometimes he doesn't get it right. मैं कहता हूँ वो कभी भी सही नहीं हो सकता. लोग वो कह रहे हैं कि कभी-कभी सही हो सकता है कभी सही नहीं हो सकता. But if you followed his instruction thinking it came from Krishna and your whole life gets messed up, you have no right to complain to him because he was just trying to help you. और अगर आप उनके निर्देश को ये मान के चल रहे थे कि कृष्ण आपको वो निर्देश देना चाहते थे और आपका पूरा जीवन तबाह हो गया लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है उनकी शिकायत करने This is the expert guy who's writing books on Diksha Shiksha Guru in ISKCON. और ये सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति हैं जो दीक्षा शिक्षा गुरु की किताबें लिखी हैं. We need a guru because we don't need a speculator. हमें गुरु चाहिए हमें मनोधर्म नहीं करना. Right? We already are speculators. हम पहले ही Speculation already not working. हमारा मनोधर्म पहले ही काम नहीं कर रहा. We don't need a better speculator. हमें कोई बेहतर मनोधर्म नहीं चाहिए. Right? We need to hear definitively from Krishna, like Arjuna said, tell me decisively, specifically, what do you want me to do? हमें निश्चित रूप से और विशेष करके कृष्ण से सुनने की जरूरत है कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं जैसे अर्जुन ने पूछा. So it means we want to hear exactly what Krishna wants you to do. इसका मतलब हम वही सुनना चाहते हैं जो कृष्ण हमसे चाहते हैं. So my Buddha said a bona fide spiritual master, he knows and realizes what is Krishna's intention for you. मेरे गुरु कहा करते थे कि प्रमाणिक गुरु जानते हैं कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं. So if the guru is a bona fide representative of Krishna, a pure by a medium of Krishna, it means Krishna is giving you the instruction through that guru. तो अगर गुरु कृष्ण के शुभ माध्यम से यानी कि कृष्ण उस गुरु के माध्यम से आपको सीधे सीधे निर्देश दे रहे We're हैं. not asking him to guess and speculate. तो हम नहीं चाहते कि वो अंदाजा लगाए या मनोधर्म कराए. I'm not a great speculator. I'm not a very bright guy. Can you speculate for me what you think? Can you guess what Krishna wants me to do? महाराज मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ अच्छा मनोधर्मी नहीं हूँ या आप मुझे बता सकते हैं कि कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं. And you know, there's a disclaimer. If everything blows up and my life gets screwed up, I won't complain that you gave me the wrong speculation. और मैं पहले घोषणा कर देता हूँ अगर मेरा पूरा जीवन तबाह हो गया आपके निर्देश को पालन करके लेकिन अंत में मैं शिकायत नहीं करूँगा. ये मैं आपसे कहता हूँ. Because he may just say, okay, I'm going to speculate now. I might get it right, I might get it wrong. But you know, don't blame me. If you don't blame me, then I'll tell you what I think. I'll tell you what I'm speculating. उन्होंने पहले कह दिया कि मैं मनोधर्म करने वाला हूँ और हमारा जीवन अगर तबाह हो जाएगा तो वो कह रहे हैं मैं तभी आपको बताऊंगा जब आप तैयार हैं कि मैं
अपना मेरा मनोधर्म सुनना चाहते हैं। And then what, you're sitting there like, boy, I hope that turns out all right. वहाँ बैठ के केवल ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उम्मीद है जो ऐसा ही हो। Then what do you say? You know, I'm going to put 50% faith in what he just said. Because it's like 50-50. It could be right, it could be wrong, right? I'm going to put 50% faith in what he just said. So what if you put 50% faith in the wrong answer? That's going to be a total disaster. You put your 50% faith in 100% the wrong answer. That's beyond in the negative. So this is all going on. That's why Prabhupada says, if you don't have a relationship and you're not depending on Super Soul and you cannot hear the Super Soul, you cannot be a bona fide spiritual master. That's what Prabhupada said. That's what the Guru Sadhu Shastra said. That's the very meaning of what is purify your medium of Krishna means. What is that spiritual message? Purify your medium of Krishna. What does that mean, Maharaj? We don't care about the Super Soul. We're not interested in the Super Soul. Where are you going to get your information, Maharaj? Think about it. Now, how do you know who's in touch with the Super Soul, who's representing the Super Soul? Only the Super Soul, only Krishna as Chaitya Guru can give you that intelligence and faith. And you're not asking him. You have no understanding faith in him, and neither you're asking him how you're going to come to the conclusion. आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किसका संबंध परमात्मा के साथ है, कौन परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है? ना तो आप परमात्मा को पूछ रहे हैं, ना परमात्मा में विश्वास कर रहे हैं, तो कैसे आपको ये बुद्धि और श्रद्धा मिलेगी? One day you're like, no, I think he's my guru. And the next day you're like, I don't know if he's my guru. ये मेरे गुरु हैं, दूसरे दिन कहते हैं मुझे नहीं लगता ये गुरु है। Then the next moment it's like, no, I think he's my guru. फिर अगले दिन कहते हैं नहीं नहीं मुझे लगता है Next moment, next day it's like, oh, I don't know if he's really my guru. अगले दिन अगले दिन मुझे लगता है शायद ये मेरे गुरु नहीं। That's a mental platform. That's not soul platform. So accepting and rejecting is the platform of the mind. If Krishna convinces, it's not on the platform of the mind, it's on the platform of the soul. So are we depending on Krishna on the platform of the soul, or are we depending on mental speculation platform? Feelings, emotions, so-called intellect, mind. Where is the basis of our faith and intelligence? हम कृष्णा के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, आत्मा के स्तर पे या अपनी भावनाओं पे, अपनी मानसिकता पे, अपने मन के प्रभावों के ऊपर हम निर्भर हो रहे हैं। हमारी श्रद्धा कहाँ से आएगी? So then the chairman of the GBC called me into one meeting. GBC के चेयरमैन ने मुझे एक मुलाकात के लिए GBC member. एक GBC के सदस्य से मुलाकात की। They want to have an interview with me. वो चाहते थे मैं उनके साथ थोड़ा साक्षात्कार करूं। I felt like I was being called into like the principal's office at school, you know, like you got in trouble and they're calling you in there, right? मुझे ऐसा लगा जैसे स्कूल में आप कुछ बदमाशी करते थे तो आपको प्रिंसिपल के पास लेकर जाते। Not that that ever happened to me. मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। I'm just saying. बस बता रहा हूँ। So you called in there and they're like, hey, are you doing like this and that, right? तो मुझे बुलाया था। कृष्णा ऐसे ऐसी बात करते हैं। ये सब स्कूल में करना। We're going to call your mother and father. This never happened to me. I heard the story like that. So they called me in the room, you know, I'm like, oh, it's like principal's office, you know. And they said, okay, sit down. I was like, oh, I'm nervous now. I'm in trouble. I'm in a big trouble. Do you understand English? You. Do you understand English? Why you're not? Oh, you're listening to his translation? You're understanding his translation? He's doing good? Yeah? You understand him? Good? All right, I'm just checking.
So they said, yes, sit down, yes, okay. उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए। So I heard you're talking about the Chikaguru, Paramatma, Super Soul. उन्होंने कहा मैंने सुना है आप चेतन परमात्मा की बात करते हैं। मैंने कहा प्रभुपाद ये सब बातें करते हैं। And they said, are we in touch with the Super Soul? फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं परमात्मा के साथ में These two GBC. Do you think we're in touch with the Super Soul? तो वो दो जीवी से पूछने लगे उन्होंने कि क्या आपको लगता है मैं परमात्मा के संपर्क में हूँ? And I was like, that's such a strange question to ask me. मुझे लगा ये बड़ा विचित्र सवाल मुझसे था। It's like a big test, like I have to say, are they in touch with the Super Soul? मुझे लगा मेरी बड़ी परीक्षा है, मुझे बताना होगा कि ये परमात्मा के संपर्क में है। So I said, okay, I'm going to have fun with these guys. मेरे साथ मजाक करते हैं। So I start looking at them like, I'm looking at their heart and I'm looking at their eyes. And I'm going like back and forth for like a few minutes, you know? And they're like shocked. Like, he's seriously seeing if we're like in touch with the Super Soul. And I'm like purposefully doing this nice drama, you know? You would have loved it. I should have got an Oscar award for that. So, and the more I was waiting and analyzing them, the more uptight they were getting, you know? Because normally you would say, oh Maharaj, you know, I'm really not on that platform, you know, please don't ask me this type of question, right? Exalted Vaishnavas, that's how you would think you would answer it, right? But I was like, okay, let me figure you guys out. And I just get to one God. No. I said no. I looked at him and said no. And I'm like shocked. How can you say that? And they started like screaming at me. And then I said, and somehow Krishna made me say, Maharaj, I'm just joking. And then they even lost it even more. Right? Because they look like fools. What kind of reaction you're giving because someone's saying, no, I don't think you're in touch with the Super Soul? You completely lost your cool, you know? You lost your mind and senses. And then after that I'm saying, I was just joking with you. Why are you taking this like so seriously? But they were already exposed, you see? I don't know why they don't like me. They should like me, right? I'm like a funny guy. Why don't they like me? I'm like a really good friend. We'll have fun together. Why don't you like me? Tell some jokes, take a shot. Like, what's wrong with them? What's your question? He's still trying to digest the last story, you know? This is how this Maharaj talks to the GBC? This is outrageous. These are our ultimate authorities. You're not taking them serious. Spiritually. Even materially. That's why they love me. Come on,
on, you gotta have all kinds of friends. You can't get everyone just to tell you what you want to hear, right? हमारे पास बहुत तरह के दोस्त होने चाहिए ऐसा नहीं कि सब वही कहते रहे जो आप सुनना चाहते हैं Don't some of your best friends just say, just okay, tell me the truth. And you know he's going to tell you the truth, but you need to hear it. But it's not going to be, you know, sweet. But you trust that he's going to give you the truth, right? So everyone needs some friends like that, right? तो ऐसे आपको एक दोस्त चाहिए होते हैं जिनको आप कहें कि मुझे अपना अच्छी सलाह दीजिए क्योंकि आप सत्य सुनना चाहते हैं और वो सत्य आपको बोलेंगे तो ऐसे दोस्त भी हमें चाहिए होते हैं You don't want just a bunch of yes men around you, right? आप नहीं चाहते आपके आसपास हाँ बोलने वाले लोग Sir, 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 yes sir, sir, sir. He has a question first. उनका एक प्रश्न करेंगे Yeah, I'll give you time to figure it out. थोड़ा समय दे रहा What are you going हूँ to say? क्या क्या बोलोगे যে বৈষ্ণব অপরাধ বড় অপরাধ তো আমরা ইসকন এবং গৌরীয় উভয় একে অপরের প্রতি যে নিন্দা মন্দা করি তো তার ফল কি আমরা সাধারণত নিম্নমট্ট অনুষ্ঠানে বা এমনি চলতে ফিরতে এমনি নানানভাবে আমরা একে অপরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করি যে ওর আচরণ ঠিক নয় আমার আচরণ ঠিক আছে ও বলছে ওরও আচরণ ঠিক নয় আমার আচরণ ঠিক আছে এই যে এক বৈষ্ণব অপরাধ এটা তো বৈষ্ণব অপরাধ তো এর ফল কি এই বিষয়ে Hare Krishna. Srila Gurudev, he's asking that amongst the devotees, many times we are coming together and then sometimes we are talking negative about each other. I am saying he Talking about what? talking negative about each other. Negative. Devotees are coming together and talking negatively about each other. Oh, you mean non-devotees? ডিভোটিস Gurudev বলছেন, कई बार हम लोग आपस में मिलते हैं और वो I'm just trying to define which quality of devotee we're talking about. You're talking about the non-devotee. উনি বলছেন तो आप किस तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं मैं वो जानना चाहता हूँ भक्तों की Those are the wannabe devotees. मतलब जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं But by being fault finding, criticizing, right, then you can't really become devotees. दोष निकालने की प्रवृत्ति और बुराई निकालने की प्रवृत्ति की वजह से वो भक्त नहीं बन पाते পিছনে হাজারো লোক ঘুরছে he's saying that but they are preachers, they are a lot of people They're are, what? they are preachers and a lot of people are following them. Good luck. I wish you the best of luck. वो पूछ रहे हैं लेकिन वो तो प्रचारक है और उनके पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं तो मैंने कहा तो आप जाकर देखिए You're going to need it. আপনাকে শুভকামনা हमें লাগে इनकी जरूरत है But if you speak honestly the truth, you know, in order to warn people, it's, you know, it's not false, you're not trying to, you know, criticize those persons for the sake of criticizing them. You're trying to make these people aware, you know, be careful. तो अगर आप सत्य बता रहे हैं तो आप लोगों को चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं ये किसी तरह का दोष निकाल रहे हैं बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं सतर्कता मदद नहीं है तो ये किसी तरह का गलत कार्य नहीं है That's what it means to speak the truth. ये मतलब होता है सत्य बोलना Prabhupada says in the purport in Bhagavad Gita 10:4 and 5. तो भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4 और 5 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं Nothing should be accepted blindly. कुछ भी अंधे तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए Everything should be accepted with care and with caution. सभी कुछ पूरी सावधानी से सतर्कता से स्वीकार किया जाना चाहिए Satyam, truthfulness, means that the facts should be presented as they are. तो सत्यम का अर्थ होता है सत्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जाए For the benefit of others. सभी के लाभ के लिए Facts should not be misrepresented. तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए According to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others. सामाजिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि सत्य आप तभी बोलिए जब तक लोगों को अच्छा लगेगा
But that is not truthfulness. लेकिन ये सत्य की परिभाषा नहीं। The truth should be spoken in a straightforward way, सत्य हमेशा बिल्कुल सीधे सीधे बोलना so that others will understand actually what the facts are. ताकि सभी लोग समझ पाएं कि असल सच्चाई क्या है। If a man is a thief and if people are warned that he is a thief, that is truth. अगर कोई व्यक्ति चोर है और उसे बताया जा रहा है कि वो चोर है तो ये सत्य है, बाकी लोगों को चेतावनी दी जा रही है। Although sometimes the truth is unpalatable. कई बार ये सत्य कड़वा होता है। One should not refrain from speaking it. लेकिन फिर भी सत्य बोलने से झगड़ना नहीं चाहिए। Truthfulness demands that the facts be presented as they are सत्य की परिभाषा है कि तथ्यों को यथार्थ प्रस्तुत किया जाए for the benefit of other people. सभी लोगों को लाभ के लिए। And that is the definition of truth. और ये है सत्य की परिभाषा। So is it a fact? It may be unpalatable, but if it's a fact, it should be presented to people because they may not understand. अगर ये सत्य है तो ये लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है। हो सकता है वो समझे नहीं इसको। Does that help you to understand? क्या आप ये मदद हुई इस बात को समझ पाए इसलिए? Wasn't he asking of the similar question last time, right? Yes. तो पिछले बार भी He was getting उन्होंने into the debate with his friend about, right? ये अपने मित्र के साथ बड़ी बहस कर रहे हैं। He's still trying to figure that one out. Does that really help you? आपकी मदद हुई असल में? We have to understand, does someone really know what is what, and then they're just trying to help us and to tell us what is the truth, what is the facts of the matter to help us? तो हमें बस ये समझने की जरूरत है कि वो व्यक्ति उनको पता है यथार्थ चीजें क्या है और वो हमारे सामने अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं यथार्थ तरीके से। Even if it's unpalatable, हो सकता है ये सुनने में बात लगे or it's politically or institutionally, not correct, या राजनीतिक रूप से या संस्था के दृष्टिकोण से ये सही ना रखा। we should know. What I'm telling you is I'm not just making up some story. I'm telling you, this was my experience. This is what I saw. This is what I heard. This is how they're preaching. This is what is their misconception. This is what they are. What are they're misrepresenting what is the actual truth or the facts of the matter. So you have to be, otherwise how are you going to help anyone understand what is right? Then you won't know. Then it could be mixed bhakti going on in the name of pure bhakti. And you could be like, I'm not even really sure I'm even on the platform of mixed bhakti. What does we get mixed bhakti posing as pure bhakti? I'm just trying to figure out if I even want to surrender to Krishna. So now you're the perfect person to analyze the distinction between mixed bhakti and pure bhakti? We don't even know we want to surrender to Krishna. I'm like, okay, let's see if this guy's on mixed bhakti platform or pure bhakti platform. Let's see what is his real motivation. I remember my Gurudev used to say the three things that you need to know the most about that guru, the potential guru. There's three things more than anything else you need to know about that person. How much faith in Krishna does he actually have? How surrendered to Krishna
is he? और उन्होंने कृष्ण को कितना स्वागत किया What is he prepared to give to Krishna? क्या तैयार है वो कृष्ण को देने के लिए Or what is he given to Krishna? या क्या वो कृष्ण को दे रहे हैं And what is his motivation? What is his ultimate motivation in what he's doing? और उनका भीतरी उद्देश्य क्या है वो जो कुछ भी कर रहे हैं So just think, you're conditioned soul, you're under the influence of tamagun, rajagun, and then you have to try to understand how much faith they have in Krishna. आप खुद तमो के जीव हैं आपको ये समझना है कि उनके पास कितनी श्रद्धा है कृष्ण में How surrendered to Krishna are they? वो कितना शरणागत है कृष्ण को And what is the motivation for their speaking? और वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य है How are you going to figure that out? ये सब चीजें हम पता कैसे करेंगे With what do you have that you're going to figure that out? आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से आप So without merciful intelligence and faith from Krishna and Sadhguru Vaishnava, you can never figure it out. तो बिना कृपा के बुद्धि के श्रद्धा के कृष्ण शास्त्र के वैष्णव से आप कभी पता नहीं लगा Gurudev, many times he said that, we are not the seers. उन्होंने कई बार कहा करते थे हम दृष्टा नहीं हैं We're to be seen. हम दृष्टा हैं Well, I'll just, use my eyeballs and I'll analyze everything, and right? We're the seers. We can see and understand everything because we're intelligent, we're wise, we have very powerful senses, and we have good discernment, and we're in touch with our emotions and feelings, and therefore we're going to understand everything absolutely. तो हम अपनी आँखों का इस्तेमाल करेंगे अपनी बुद्धि का अपनी शक्ति का अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करेंगे हम अपने भावनाओं के स्तर पे हैं और इसके माध्यम से हम सारी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से समझने की Doesn't Krishna say, if you're coming to me, you're trying to understand me, not in this mood of pure devotional service, I'll hide myself from you. कृष्ण ने कहा है अगर आप मेरे पास आने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर आप प्रेम और भक्ति के भाव से नहीं तो मैं अपने आप को वहां से छुपा कर रखूंगा And of course, Krishna is the witness and judge of what is our real motivation. और कृष्ण असल गवाह है और वो फैसला लेंगे कि हमारा भीतरी उद्देश्य क्या है Krishna says, if you want to surrender and serve me in loving devotion, I'll give you intelligence. कृष्ण बताते हैं अगर आप प्रेम और भक्ति भाव से मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप उस तक पहुंच पाएंगे But if that's not our ultimate motivation, then Krishna says, I'll just hide myself from you. लेकिन अगर ये हमारा भीतरी उद्देश्य नहीं है तो कृष्ण कहते हैं वो हमें अपने आप को छुपा कर रखेंगे So it's same with Guru. तो गुरु के साथ भी ऐसा ही है Right? Prabhupada says you cannot challenge Guru and Krishna and know them at the same time. और कहते हैं आप गुरु और कृष्ण को चुनौती देके उनको समझने का प्रयास करते हैं By their mercy, they can reveal themselves. उनकी कृपा से वो सब कुछ प्रकाशित कर सकते हैं And if we don't come in the right way, in the right mood, with the right motivation, then they'll hide themselves. अगर हम सही तरीके से सही भाव से सही उद्देश्य से उनके पास नहीं रहेंगे And then वो you'll अपने just आप को be छुपा caught up in some kind of mental speculation on sentimental platform. तो हम बस केवल फंसे रहेंगे हमारे मन में या हमारे भावुकता Usually depending on eyeballs, senses. जरूरत से ज्यादा हम निर्भर बने रहेंगे हमारी आंखों के ऊपर हमारे इंद्रियों के ऊपर If I just stare at him enough, I'll figure him out. अगर मैं काफी देर तक उनको घूमता रहूं तो मैं पता लगा लूंगा Like, what Prabhupada says, we think seeing is believing. हम जो देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं But in spiritual life, especially, hearing is most important sense. लेकिन विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में कान श्रवण जो है सबसे महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण Prabhupada says, even materially, even you're sleeping, the only sense that can protect you is your ear. भगवान उदाहरण देने में कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो एक ही मात्र चीज होती है जो आपको बचा सकती है वो आपका कान So even the sleeping state, your ear will say, oh, there's danger, somebody's in my room or something like that. जब सोने की अवस्था में भी हैं तो आपके कान आपको बताएंगे कोई खतरा आ रहा है या कमरे में कोई आ रहा है So, but we're overly depending on eyeballs, तो हम जरूरत से ज्यादा अपनी आंखों पे निर्भर हैं even though it's so faulty senses. और यद्यपि ये आंखें बहुत त्रुटिपूर्ण इंद्रिय हैं What are they saying? And what is the effect of what are they saying? And how is Krishna giving you intelligence and faith to understand that process? That's what has to be
realized. तो आपको वो क्या बातें कही जा रही है और आपके अंदर क्या प्रभाव हो रहा है और कैसे कृष्ण आपको बुद्धि दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं, वो बातें बातें कही जा रही हैं। You ready? आप तैयार हैं? You figured it out? पता लगा लिया? Okay. ठीक है? Is everyone doing all right? ठीक है? Hand over that microphone. You guys trying to steal the microphone. He's another one. He wants to always be heard, you know? He's like Adam, you know, once he gets the microphone, you cannot get it out. Even if he's dead, you know, you're gonna have to like pry the microphone out of his head. He's dead, just. When I go on circuit and distribute books, Yeah. then this at times there's like a harinam going around me. The Harinam is, they're all celebrating you're distributing books. Distributing books, and Harinam is going around. Next to Are they demigods? Here out of nowhere? Are they throwing flowers on you? Did I misunderstand? What are you saying? A little bit? next to sorry, next to So what happened? next to so So the kids, are they chanting your name? That would be scary. That would be scary. When they were saying Sham, were you thinking it was you? It's not me. Don't feel bad. Don't blame me. I'm also hearing this for the first time. I'm also participating. So what happened? Should I join the kirtan or continue distributing the books? should I join the kirtan? I have no inclination to join the kirtan, but I'm next to them distributing books because there's a crowd. So I pray before to be protected, but still being around and the fact the sound is there, will it still affect my consciousness? Although I'm not taking part and enjoying it, Is it purifying you or contaminating you? yeah, or Is Adam chanting? Is it disturbing you? Is it contaminating you? Is that what you're saying? प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब मैं इस तरह से वर्ष प्रचार कर रहा हूँ मेरे आसपास कितने लोग थे तो क्या मैं उसमें भाग नहीं ले रहा हूँ कीर्तन में या फिर भी उसका प्रभाव मेरे ऊपर आएगा वहाँ मौजूद रहने की क्या आप जानना चाह रहे हैं कि एडम का जो कीर्तन है वो आपको परेशान करता है आपके अंदर क्या प्रभाव होता है जब आप उनका कीर्तन सुनते हैं So who's chanting and what is the effect of the chanting? That's my question. तो कौन कीर्तन कर रहा है और कीर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है ये मेरा प्रश्न है I'm hoping it's positive. मुझे उम्मीद है सकारात्मक प्रभाव Is it positive? सकारात्मक प्रभाव था You don't know? पता नहीं था it's not really attracting me. Huh? It's not really attracting. It's not attracting me. So It's not positive attracting for you? me. It's not so much positive. So you're getting a higher taste by distributing the books? Yeah. Is that your point? Yeah, but I'm still around next to them. When you're around them, Next to. you're next to them. They're not going around you. I got this idea that he's distributing books and they're like dancing around him. Not yet. Not yet.
That might be tough to sell the book to somebody, you know? You know, you're just trying to make a simple transaction, you know, and like this whole party's dancing around the guy's like, okay, maybe I won't buy the book. You know? It's too much. I just want to think about it as a philosophy, you know? And then someone has like buzzers and they're like trying to buzz his ear off. Thank you for buying the book, you know. It's like too much. It's too quick. Too quick. Get him in a dhoti, you know. Distract his mother right now. I'm really sorry that I do this. It's just what I'm seeing, you know. It's just an unbelievable situation going on there. I got carried away a little bit. But there's an actual question in the middle of all of this. Even he forgot what he was asking. So what's the essence of the question? Give the essence. The essence, I guess, is this: am I taking unnecessary risks? Am I taking a necessary risk? Yeah. Of hearing their kirtan? Oh, being around. Being around. Yeah. प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैं कोई खतरा उठा रहा हूँ उनके आसपास रह के मैं भी What's the risk? खतरा क्या है तो बोलते उत्तर दे रहे हैं कि खतरा क्या है आपके लिए? Well, you are mentioning about where the sound, where it's coming from, and bona fide. And so you don't like the sound vibration? You don't think it's helping you? तो पूछ रहे हैं कि अगर उस शब्द का आपने बताया कि आपके अंदर कैसा प्रभाव और आपकी चेतना को प्रभावित करेगा अगर विष्णु की जगह से नहीं आगे तो गुरुदेव पूछ रहे हैं कि आपको ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है कि आप शुद्ध हो रहे हैं उसको सुन के I'm just trying to understand you. मैं केवल आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ What do you think you're risking being around them? तो आपको कौन सा खतरा उनके आसपास रहने की वजह से हो रहा है आपको ऐसा लगता है About what devotees you are asking? Sorry? About what kind of devotees you are asking between Kirtan? Here. Our devotees? No, not from school. He's saying, ISKCON devotees? It's good morning Harinam, yes? Yeah. Good morning, I Harinam. know this now. Did that? I was getting scared. You know? बात कर रहे थे ISKCON के अंदर में जो हरिनाम उनके आसपास ही सब बैठे थे यहाँ की बात कर रहे हैं मुझे बस वैसा लग रहा था तो मैं थोड़ा डर गया था कि आप यहाँ के बारे में सब बात करें I mean, if it was Adam, I could understand. But other than that, okay, take Adam out of the equation, then it's like you're still scared and you're still risking. I'm like, my God, who are you listening to? Did her medicine, man. Oh, other people. And when you mention like performance, it feels like definitely it's like a performance. But then there's a crowd, people, and so also there. Also Maybe you could put some headphones on, some noise cancelling headphones. परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लोग बहुत सारे उसके साथ जुड़ रहे हैं तो गुरुदेव बता रहे हैं कि आप जो है आवाज को खत्म करने वाले हेडफोन्स लगा लीजिएगा And then just put some plug in their ear when you're trying to tell them something, you know, whoever you're distributing the books to. You know?
जिनको आप किताब बेचने का प्रयास कर रहे हैं उनके कानों में भी आप सर्च करके That's for donation. Then like, sir, can I put these plugs in your ear? तो आपको कहेंगे कि सर Something to tell you. ये प्लग से आप लगा सकते हैं मुझे आपको कुछ बताना है आपको Is that what you're trying to do? क्या आप ये करने का प्रयास करते हैं I'm complicating this question. Am I complicating it? जटिल बना रहा हूं क्या मैं जटिल बना रहा हूं Am I complicated? क्या मैं जटिल बना रहा हूं इसको I think I complicated it. It went from like the demigods coming, showering flowers, you know, glorifying his book distribution. मैंने ऐसा लगा कि देवी देवता आ रहे हैं चारों ओर घूम रहे हैं उत्सव मना रहे Started off positive. हमारे इंडियन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उत्सव And now you've got noise cancelling headphones on, trying to secretly inform people why they should take Prabhupada's books. This has become a psyop operation. A simple guy asking a simple question, and I've answered in such a way he needs an ISKCON psychologist. He thought he had problems before. I just gave him a bunch of reasons why he has more problems than he even knew. So just distribute the books. Keep it simple. But when you're distributing books, it's like a total meditation. You're praying to Krishna. Please give me intelligence. Please inspire this person. What to say, what to say. It's a complete meditation if you're doing it properly. Who cares what's going on around you? If it's, you know, the pure Vaishnavas descending from the heavenly planets, you might want to join in the kirtan. That's what I thought his original question was, like, you know, should I distribute the books or should I join in the Premanam Sankirtan? I thought that's what his problem was. But it's different. Thank you, Devaki, for that clarification. It takes the French guy to translate, the Russian guy to translate from the French guy to go to the deaf guy. So are we good? Just distribute the books, you know? Let it all go on. No problem. I have another question. Oh my God. Is this a question from your question? Or is this a different question? I hope it's different. Otherwise, I confuse the boy, you know? When there's also when I'm distributing books, some devotees are coming and kind of like disturbing me, and so Why are they disturbing? asking different questions about a spiritual master, about You mean ISKCON devotee? yeah. They're not asking you, like, do you think we're in touch with the super soul? They're not asking this. Then you just do what I do, you know, you look at them and say, no, you're not. Then they won't ask you any more questions. Why do they want to disturb you?
Why don't you just say, look, I'm doing my seva, I'm trying to distribute Prabhupada's books, and I'm fully engaged. I don't really have any discussion to have with you right now. आप उनको ये क्यों नहीं कहते वो आपको परेशान क्यों कर रहे हैं कि मैं बांटने के लिए प्रयास कर रहा हूँ मेरे पास समय नहीं है अभी चर्चा करने के लिए मैं अपनी सेवा में ध्यान लगाना चाहता हूँ Why be disturbed in your seva? क्यों आप अपनी सेवा में परेशान हो गए I remember when I first started distributing books and these born again Christians used to come up to me. I would start trying to preach to them. And then we'd have like these big philosophical debates, the difference between Christianity and the Vedic culture. और फिर हमारी बड़ी सैद्धांतिक बहसबाजी होती थी कि वैदिक संस्कृति और हिंदू संस्कृति में ईसाई संस्कृति में क्या अंतर है And you know, we go on for a long time, and then everyone's completely frustrated at the end, and then I walk away, and I feel horrible, you know. It's like, what a waste of time. और इतने जो बहस करने के बाद पूरी तरह से क्लास चले गए और दोनों पूरी तरह से निराश हताश होकर वापस चले जाते थे हम पूरा भयावह महसूस करते थे It's just like a debate on the false ego platform. Who's right? Who has the right understanding? Who is smarter? Who are elected? कौन सही है किसकी समझ सही है कौन ज़्यादा बुद्धिमान है ये बहस होती है But you know, it says you're preaching to faithless people. So better not try to preach to faithless people. It's an offense. So if someone is very simple-hearted and they really genuinely think that you can say something to help them to understand something, then you may try. But if they're just challenging and argumentative and disturbing, they have no faith, they're not going to listen to you, so why waste your time and energy trying to preach to faithless people? अगर कोई बहुत सारी व्यक्ति है कोई आपसे जिज्ञासा करना चाहते हैं श्रद्धा के विषय में विश्वास कैसे हैं तब आप उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन अगर कोई केवल आपसे बहसबाजी करना चाहता है आपसे तर्क करना चाहता है तो आप और उनके पास कोई श्रद्धा नहीं तो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो Are they coming to genuinely learn something from you? क्या वो आपसे कुछ सीखने के लिए आपके पास आ रहे हैं Then the Maya is just sending in faithless people to disturb you. तो माया श्रद्धाहीन व्यक्ति को आपके पास भेज रही है आपसे परेशान कर रही है So you just have to realize that and then just say to them that, you know, to be honest with you right now, I'm just trying to get Prabhupada's mercy by distributing these books. So please don't disturb me. तो उनसे बचने के लिए आप लोग कह सकते हैं कि मैं श्री प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं श्री प्रभुपाद की कृपा प्राप्त कर सकूँ इस सेवा की But what happens is if you let them in and then they ask one question and then another question and you're answering right, so you're just inviting fake Maya to send in these faithless people who are just sucking you into this, you know, this matrix of confusion. And you're just, before you know it, you're completely sucked into this kind of useless discussion and argument where you're trying to preach to faithless people. You could lose all your faith by discussing with these type of people. तो ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्ति को जो प्रचार कर रहे होते हैं तो वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं फिर आप उसके सवाल को उत्तर देने लगते हैं फिर वो दूसरा सवाल आपको पूछते हैं इस तरीके से आप उसको प्रचार करने में अपना सारा समय खत्म करने लगते हैं और धीरे धीरे आप अंत में देखेंगे कि आपका श्रद्धा ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्ति को प्रचार करने में My Gurudev said there's some, before you even think that you're going to try to help somebody, you should think, if I explain this to this person, will they honestly consider it and will they accept it from me? तो मेरे उद्देश्य द्वारा से बोला जाता है कि अगर आप किसी को कोई बात बताना चाहते हैं तो सबसे पहले ये विचार करना चाहिए क्या ये व्यक्ति उसका सम्मान करेगा उसको स्वीकार करेगा जो मैं उनको कहने वाला हूँ So if they'll not, you know, in a humble way, simple way, honestly consider what you're saying and perhaps accepting what you're saying, then better don't even try to speak to them or preach to them. तो अगर वह विनम्र भाव से सरल भाव से आप जो बातें कहना चाहते हैं उनको स्वीकार करने के लिए ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो तो बेहतर होगा आप उनसे बात करें Even if you have knowledge and realization and experience, if they're not going to listen to you and they just want to waste your time or agitate you, disturb you,
or they won't nicely take what you're saying, then why bother, why disturb them? तो हो सकता है आपके पास ज्ञान है, साक्षात्कार है, अनुभव है, लेकिन अगर वो उसको आपसे लेना नहीं चाहते हैं, बस आपको परेशान करना चाहते हैं, तो क्यों अपना समय उनके साथ बर्बाद करना चाहते Why disturb yourself? हैं? क्यों आप खुद को परेशान कर रहे हैं? And I realized after this preaching to faithless people, these Christians, I said that was a total waste of time. They didn't buy the book, right? I didn't take anything from them. They didn't take anything from me, and the whole thing was just a philosophical argument that just wasted my time, where I could have been distributing many more books to other people. तो अंत में मैंने ये देखा, जब मैं ऐसे बॉर्डगन ईसाई लोगों को मैं प्रचार कर रहा था, हमने काफी बहसबाजी की, काफी समय नष्ट हुआ, ना तो उन्होंने मुझसे कोई भी चीज दी, ना मेरी किताब खरीदी, ना उन्होंने मुझे कोई चीज दी, और दोनों के बीच कोई लेन देन नहीं था, तो हम दोनों थक गए, और उसके बजाय मैं उसी समय का इस्तेमाल अन्य बहुत सारे लोगों को किताबें बांटने के लिए कर सकता हूँ। So I had to go through that to learn that lesson. Like, oh, that was a waste of time. तो मुझे इस परिस्थिति से गुजरना पड़ा, इस शिक्षा को लेकर, इस पाठ को सीखने के लिए। Then Krishna Prabhupada gave me intelligence to know, you know, I would see them coming towards me, and I would say to them, oh, Boston Church of Christ. I would tell them which church they were coming from, and they were like, how do you know, what church you're coming from? I said, oh, God gives me intelligence, you know. और फिर उसके बाद शिक्षा में मैंने पाठ जब सीख लिया, उसके बाद जब ऐसे लोग मेरे सामने आ रहे होते थे, तुरंत मुझे भगवान ये बुद्धि और श्रद्धा दे रहे होते थे कि ये व्यक्ति बिल्कुल कौन से चर्च से आया है। मैं कहता था बॉस्टन चर्च से, मैं कहता था मैं कहता मुझे भगवान से बुद्धि मिल रही है। And then I made a joke. I said, I can see you people like from 1 mile away. और फिर मैं मजाक में ये भी कहता था कि एक मील दूर से भी जब आप दूर रहे तब भी मैं आपको देख सकता हूँ। So the more you get experience, the more you'll understand. Okay, here's Maya is sending this person towards me. जितना ज़्यादा आप अनुभवी होंगे, उतना ज़्यादा आप देख पाएंगे कि माया ने इस व्यक्ति को आपके पास भेजा है। Krishna will give you intelligence. कृष्ण आपको बुद्धि देगा। But if we're not listening and we're sentimental and we're emotional, right, then Maya will just send these people into you, and then you're going to have to learn the hard way that, wow, that was a waste of time, or that was risky, or that was, disturbing conversation. Right? Then you'll have to learn after the fact. और अगर आप सुनेंगे नहीं और सावधान नहीं रहेंगे और ये सब चीज़ सामने आपको आएंगी, तो आपको कठिन तरीके से सीखना पड़ेगा। तो आप उनसे बातचीत करेंगे, आपकी श्रद्धा खत्म होने लगेगी, आप देखेंगे ये कितना बड़ा खतरा है, आप पूरी तरह से खराब चेतना में रहेंगे। You understand? आप समझ पाएंगे? So pray to Krishna to give you intelligence, protect you from asatsanga. तो कृष्ण से प्रार्थना कीजिए आपको बचाने के लिए असत्संग से। Just look for simple-hearted people. और सरल हृदय वाले लोगों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। That's best. People who are very complicated, right? Better just avoid those type of people. ये सबसे अच्छा है। जो लोग बहुत जटिल हैं, बेहतर हो उनको आप किसी तरह से नकारने का प्रयास कीजिए। Just look for simple-hearted people. ये सरल हृदय वाले लोगों के लिए। That's right. I mean, I do that to pray before. But Huh? I pray before to No, constantly pray. constantly pray. वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा पहले प्रार्थना करता हूँ, वो बता रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना कीजिए। Not before. जब वो आ रहे हैं उसके पहले। Krishna says, and all of your activities depend upon me. कृष्ण कहते हैं सभी काम कार्य मेरे ऊपर हैं। Work under my protection. मेरे रक्षण में कार्य Be fully conscious of me. मेरी पूर्ण चेतना में रहो। All of your activities. और एक कार्य Then you'll get through that. तब आप उससे पार जा पाएंगे। Because as soon as we're not like that, in that consciousness depending on Krishna, then that's when you're weak and Maya will send somebody into you. जैसे हम उस चेतना में नहीं हैं, कृष्ण के प्रति नहीं हैं, उसमें हम कमजोर हैं, और उसी वक्त माया आप ही पर हमला करेगी। And then you're not ready for it. और तब आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। And then now you're caught up in this conversation. और तब आप उससे चर्चा में फंस गए। Now you're sucked into it. Now it's more difficult to get out of it. अगर आप उसको घुस जा रहे हैं, तो आपके पास रास्ता नहीं उससे बाहर निकलना। So it's better to do, preventative medicine बेहतर हो पहले सावधानी बरती जाए। than to solve it when you're, practically on the deathbed.
उस समय आप उसको सुधार करने का प्रयास करें जब आप बीमारी की मृत्यु के नजदीक पहुंचे। It's like crawling back after distributing books, crawling back to the temple. जैसे वो मंदिर में वापस देखते हुए पहुंचते हैं अपने किताबों को बांटने के बाद। It's like you went through World War I, World War II. प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध से होकर It's गुजरते like, what बाद happened to you? I was preaching to the people. उससे क्या हुआ आपके साथ? वो कहते हैं कि मैं बाहर लोगों को प्रचार You करता should be like purified, enlivened, and ecstatic. आपको शुद्ध पूरे भाव विभोर हो जाना चाहिए। You're trying to say even the right thing, but to the wrong people. तो आप सही चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन गलत बात कर रहे हैं। And then because your faith is very new, क्योंकि आपका श्रद्धा अभी बहुत नया है। it's a कोमल श्रद्धा. ये कोमल श्रद्धा है। Right, like a little plant's coming up. It's coming up, but it's very weak in condition. Needs to be in a fence. ये छोटा पौधा अभी फूल रहा है, लेकिन ये बहुत कमजोर है, कोमल है, तो इसे आसपास So that's what's risky. If you're just staying out there too long or by yourself, you're like a little plant. Anybody can come. Any bull, any buffalo, anybody can knock it over. You know what I mean? बहुत ज़्यादा देर अगर बाहर रहेंगे, तो कोई बैल, कोई भैंस आएगा, कुचल के जाएगा। Tigers, lions, शेर, बाघ, ferocious animals, बहुत bears, जानवर, भालू, sharks. Everything is there. सब कुछ है। Vultures. गिद्ध, And this little Sham, little sincere Sham, he's got no equipment, he's like going to the battle, right? He has like no medal on, no helmet, right? He's going like with a flower, like a World War, screw changes going on around. Just like flowers. श्याम जो है वहाँ कुरुक्षेत्र स्थल में जा रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कोई हेलमेट नहीं, कुछ लोहे की बाल नहीं, एक फूल लेके जा रहे हैं, फूल सबको दे रहे हैं, और इधर-उधर घूम रहे हैं। The Nazis are coming out. नाज़ी आ रहे हैं। It's a dangerous situation. बहुत खतरनाक स्थिति है। You're like, yeah, but I'm in the temple. लेकिन मैं मंदिर में हूँ, पवित्र धाम है। Keep your guard up. सावधानी बरकरार रखिए। Where we should do submissive surrender and submissive all reception, like, oh, I'm just trying to be careful. जहाँ हमें विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए, वहाँ पर हमके साथ थोड़ा सावधान रहना चाहिए। I'm just trying to protect myself. मैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। And then you go out into the world of, the vicious animals, and you're just like, I'm just being friends with everybody, I don't flowers, जहाँ भूखा जानवर है, वहाँ कह रहे हो फिर बस यहाँ लोगों को से कोई बातचीत दोस्ताना रवैया बनाने के लिए आया हूँ और कुछ में किताबें पढ़ रहा हूँ। It's like Prabhupada said, you go in the forest, where the lions are, and you're like, well, they're spirit souls too, आप जंगल में आते हैं, कहते हैं वो शेर भी तो जीवात्मा है। You're gonna get your head ripped off, सर उखाड़ देगा। I'm just doing Sangha. He had saffron on. Dangerous. You're in the enemy, behind enemy lines. So you have to be careful. Very few people are very serious. Understand that. Maya's captured everybody, more or less. So just look for very simple-hearted people. Innocent, simple, pure-hearted people. And avoid everybody else. As much as possible. Because that is risky, that is dangerous. And it's risky, and you're wasting your time and your energy in a very dangerous situation. So then you have to be expert how to avoid
the vicious animals. अब आपको बहुत निपुण होना होगा कैसे आप इस खतरनाक जानवरों से बच सकेंगे। You have to do some kung fu, tai chi, something, you know? कुछ कुंफू, tai chi, Spiritual. आध्यात्मिक Spiritually. आध्यात्मिक तरीके से How to avoid the fight. कैसे आप लड़ाई से बच सकते हैं। Alright? Hallelujah. And Krishna will give you that intelligence. कृष्ण आपको But if you're like, I'm in the dark, and I'm amongst the devotees, and everybody is so sincere, मैं धाम में हूँ, आसपास भक्त हैं, सभी कितने गंभीर हैं, निष्ठ हैं, everybody's, you know, a spirit soul, सभी कोई है, जीवात्मा है, right? Everyone belongs to Krishna. सभी कोई कृष्ण का है। He's trying to act like a Uttama Adhikari. उत्तम अधिकारी की तरह चलने का नाटक करने का प्रयास करते हैं। I love Krishna, so I love all the people. हमें कृष्ण से प्यार करना चाहिए, सभी लोगों से प्यार करते हैं। When I hear this, it drives me crazy. You know, I love all the people. जब मैं सुनता हूँ, तो पूरी तरह पागल हो जाता हूँ कि मैं सभी लोगों से प्रेम I करता love all the people. हूँ, सभी लोगों से प्रेम करता हूँ। Dharma, is it? Alright. Are you alright without the ear massage? जब ठीक है, आपके कानों का दर्द मसाज नहीं अच्छा है। Sham, you know, I'm like a rough guy, you know. I feel like I want to go out there and like be his bodyguard, you know. मैं थोड़ा सा तगड़ा व्यक्ति हूँ, मैं सोचता हूँ कि उनका बॉडीगार्ड बनने का आपके साथ बनेगा। Alright, I'll take you. I'll protect you while you distribute books. If anyone messes with you, they're gonna get it, you know. Some kind of guy who's distributing books. Don't worry, I get your back. कोई ये छोटा सा कुछ उल्टा पार्टी का प्रयास कर रहा है, मैं इसके पीछे रहूँगा बचाने के लिए। I'll go out there with you. मैं आप बाहर जाऊँगा आपके साथ। I'll preach to these people in such a way they'll never preach to you again. मैं इन लोगों का ऐसा प्रचार करूँगा, वो दोबारा आपको प्रचार करने नहीं आएंगे। They'll get everything they need. He finally got the microphone. I'm like, how did he get that in his hand, man? It's amazing. He's like a magnet, you know. Shakes his power, you know. Wherever it is, he's like, microphone's like. All right, let's see the immediate urgency of your question. That he didn't hear anything for 2 hours because he needs the microphone. So this better be the question, the eternal question now. Education Secretary. So I was listening to one of your lectures and What? I was listening to your lecture, an audio lecture. Poor guy. And मैं आपका प्रवचन सुन रहा था एक बार, तो मुझे बता रहे हो। I'm sorry it's me, you know. बेचारा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा आपको प्रवचन सुनना पड़ रहा था। so I was listening about Guru Tattva and so basically like the super soul is the Cheta Guru, who is the actual Adi Guru is Cheta Guru, yeah? Yeah, Adi Guru, Cheta Guru. The super soul is the real Guru. And you're the Atma, you're the soul, Yeah. and you're sitting next to the super soul. Yeah. And you have an eternal loving, potentially an eternal loving relationship there. Yes. If you would just learn to listen to him, अगर आप सीखेंगे कैसे आप परमात्मा को सुन पाएंगे, and then what happens? उसके बाद क्या होगा? And bona fide spiritual master is the external manifestation of that super soul. Yeah, so first know the Guru inside, उसे परमात्मा गुरु जो है उसी परमात्मा and then he'll tell you when he steps outside. गुरु बताने पहले आप सत्य जानिए परमात्मा को, फिर वो आप ये भी जान जाएंगे जब वो बाहर है। Either through the spiritual master or through the Shastra. तो या गुरु के माध्यम से That's why that intelligence and faith is internal, spiritual life is internal.
इसलिए ये बुद्धि और श्रद्धा ये भीतर से आती है, ये आध्यात्मिक जीवन भक्ति जीवन की That intelligence and faith comes from Krishna inside. और ये बुद्धि और श्रद्धा कृष्णा से आती है, लेकिन भीतर से। And then when you hear the truth on the outside, through Guru, through the Shastra, to the devotees, then Krishna will say, yes, this is the truth. This is the ring of truth. You should accept that. और जब वही सत्य आप जब बाहर गुरु के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से श्रवण करेंगे, तो कृष्ण आपके हृदय में परमात्मा को बताएंगे कि ये जानकारी से। So, when we want to make decisions, when they extend. There's only one decision. Are you going to listen for what Krishna wants you to do? Or are you going to listen to what Maya wants you to do? मुझे हमें फैसला लेना है, मुझे बताएं आप कोई नहीं फैसला लेना है कि आप वो सुनने के लिए तैयार हैं जो कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं या वो सुनने के लिए तैयार हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। So that's the first decision we have to make. पहला निर्णय हमें लेना है। So do you want to know what Krishna wants you to do or what Maya wants you to तो do? आप ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं या माया आपसे क्या चाहते हैं? But Krishna wants me to do. Are you asking Krishna? तो कह रहे हैं कृष्ण Are you praying to Krishna? Krishna, you're the Lord of the heart, right? You are the source of all knowledge, intelligence, and remembrance of you. तो क्या आप Can you कृष्ण से kindly, please help me to understand specifically, decisively what you want me to do, and I will do my level best to understand it and execute it. तो कृष्ण आपके Every part of me that I can. Are you praying to Krishna like that? तो क्या आप अपने हृदय में कृष्णा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा मुझे पता है आप हमारे हृदय में मौजूद हैं, आपसे बुद्धि आती है, ज्ञान आती है और मैं आपकी योजना को जानना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए कैसे मैं आपकी योजना को जान सकता हूँ और मैं पूरा श्रेष्ठ करने के लिए तैयार हूँ आपकी योजना को पूरा करने के लिए। Have you convinced Krishna? क्या कृष्णा को आपने इस तरीके से आश्वस्त किया है? Have you made that decision? Have you convinced Krishna क्या आपने ये फैसला ले लिया है? what you need to hear from him and that you're going to accept what he tells you? जो कृष्णा आपको बोलेंगे आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उसको पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। Then Krishna will send you a bona fide guru. तब कृष्णा आपको हमारे गुरु भेजेंगे। Prabhupada says sincerity and seriousness to fully surrender to Krishna is the prerequisite for Krishna to send you a bona fide spiritual master, pure by the medium of Krishna. बताते हैं कि आपकी गंभीरता और कृष्णा कृष्णा को शरणागत सेवा करने के लिए ये आपकी पहली योग्यता होनी चाहिए। कृष्णा आपके जीवन में हमारे गुरु को भेजेंगे। Prabhupada said otherwise you don't need a guru. तो बात कहते हैं इसके गुरु You're just acting as your own guru. इसके बिना आपको गुरु की जरूरत नहीं है वरना आप खुद के Whatever you think, whatever you want to do, whatever your desires are, whatever your concoction, whatever addition, manufacturing you do, you're just going to follow Maya. तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, जो भी मनोधर्म कर रहे हैं, सब ये सब माया से आ रही है और माया को अपना रहे हैं। अगर आप ये निर्णय नहीं करते हैं, Maya controlling your mind is telling you what to think and what to do. माया आपके मन को नियंत्रण कर रही है और आपको बता रही है कि आपको सोचना चाहिए कि आपको करना चाहिए। Chain around the neck, force, drag. तो गले में जंजीर डालकर घसीट कर जबरदस्ती लेकर And you're cooperating with that. और आप उसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। So you have to be cheated. तो आप ठगे जाएंगे। We have to take a heavy punishment and reaction हमें बहुत ही भारी दंड और मार खानी पड़ेगी because we're not listening. क्योंकि हम सुन नहीं रहे। We're not even bothering to ask what to speak of listening. हम तो इतनी परेशानी में नहीं उठा रहे हैं कि हम उनसे पूछें तो सुनने का क्या कहें। So Krishna said, if you can't hear me, you're lost. कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे सुन नहीं सकते तो Lost means tamagum. भटकने का मतलब तमोगुण अज्ञान। And ignorance is the root cause of the future suffering condition. और अज्ञान ही आपके भविष्य के दुखों का कारण है। So now we need more suffering, more heavy lashes, if we don't want to listen. और दुख और भारी मार खाने की जरूरत है क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार हैं। So who's going to tell you? कि कौन आपको बताएगा? Even Krishna could not convince you. कृष्ण कि कृष्ण आपको आश्वस्त नहीं कर पाएंगे। So how the guru is going to convince तो you? कैसे गुरु आपको आश्वस्त कर पाएंगे? You saw when Arjuna was coming up, was skillfully avoiding the fighting.
right? तो देखिए अर्जुन जब चालाकी से युद्ध से बचने का प्रयास करता And he was giving all these philosophical reasons why he doesn't have to fight, why he cannot fight. और वो सारे सैद्धांतिक बहस देने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों नहीं युद्ध नहीं करते And it was all misguided arguments. और ये सारे गलत मार्गदर्शित बहसबाजी That's why Prabhupada said he skillfully was avoiding the fights with these misguided so-called philosophical kind of arguments. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन चालाकी से युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे थे अपने फालतू सैद्धांतिक तर्क। But when he was coming up with all of those arguments, Krishna wasn't preaching to Arjuna. तो जब वो इस तरह से अपनी बहस कृष्ण के सामने रख रहे थे तो कृष्ण अर्जुन का प्रचार नहीं कर रहे थे Because he understood he's preaching to himself. क्योंकि कृष्ण समझ पा रहे थे कि ये खुद को ही केवल प्रचार He's trying to figure it out on his own. ये खुद से ही पता लगाने का प्रयास कर रहा है And when he was exhausted with all of that, Arjuna, अर्जुन इन सब ये सभी चीजें करके थक गया and he couldn't come to some good solution, और वो किसी सही समाधान तक नहीं पहुंच and पाया he had no hope and faith that anything he was coming up with was really going to work, और उनको कोई श्रद्धा विश्वास या आशा नहीं रही जो कुछ भी वो सोचेंगे and it was counterproductive, और इसके उल्टा उनके ऊपर प्रभाव हो रहा है then he surrendered. तब उन्होंने अर्जुन ने सलाह Once he surrendered to Krishna, एक बार उन्होंने कृष्ण को he सलाह said, let's stop the friendly talks. तो अर्जुन ने कहा अब हम दोस्ताना बातचीत बंद करें Now I need you to be my guru. अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु बनें I'm a soul surrendered unto you. Now I'm your das, your shishya. तो मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूँ मैं आपका शिष्य Now हूँ मैं he's आपका दास taking the हूँ role as shishya. अब उन्होंने शिष्य का भूमिका उन्होंने And he's telling you, you're my spiritual master, so now you tell me decisively, specifically, what should I do? उन्होंने कहा आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं मुझे निश्चित रूप से और विशेष करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए Then Krishna told him. और तब कृष्ण ने उनको बताया So without surrender, and without asking Krishna, then why would we think Krishna will tell us anything? बिना कृष्ण को शरणागत किए बिना कृष्ण को पूछे हम क्यों सोचते हैं कि कृष्ण हमें सब कुछ बताएंगे So then what's the discussion about who's a guru, what's a guru? तो ये चर्चा करने का क्या कौन है गुरु क्या है गुरु It's a meaningless. ये सब फालतू बात है Well, if I was going to surrender, what is a guru? अगर मैं शरणागत करना चाहता तो गुरु का मतलब क्या होगा How are you going to understand that transcendental topic? ये दिव्य विषय कैसे समझ पाएंगे It's not an academic description or definition of what is a guru. ये कोई शैक्षणिक चर्चा नहीं है कि आप समझ जाएं उसके माध्यम It's से not going to convince you about anything. इससे आप किसी भी चीज के प्रति विषय के प्रति आश्वस्त नहीं होंगे And nowadays, right, they have all these big companies that write all these vocabularies, right, these books, right? Now they're changing all the definitions. और अभी जो बड़ी कंपनी है जो शब्दकोश बनाते हैं वो सारे शब्दों की परिभाषा बनाते हैं This Oxford, right, Cambridge dictionaries, right? ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज शब्दकोश है Right? Now they change the definition of what is a man and what is a woman. अब उससे परिभाषा बदलती है स्त्री और पुरुष की क्या परिभाषा है Can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं Now you have to change the definition of what does definition mean. तो उन्होंने परिभाषा की परिभाषा बदल दी है Right? Where do you stop? कहाँ रुकेंगे Right? Well, that's your truth. That's your definition. ये आपकी परिभाषा है ये आपका सत्य है Everything is relative. सब कुछ Floating, we're floating at relativity. तो सब कुछ ऊपर नीचे है यहाँ पे तुलनात्मक बातें की You जाती can adjust it all whimsically, foolishly as you go. तो सब कुछ अपने मनो इच्छा के आधार पे और गलत तरीके से Then we're just under control of Maya. तो हम माया के नियंत्रण में Isn't this always his question? ये हमेशा इनका यही सवाल है Since I met you, every time you need that microphone, right? You ask me the same question. जब से आप मुझसे मिले हैं जब भी आपको ये माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है यही So सवाल this पूछता is हूँ like the 5th to 6th time that I've exactly answered that question. और ये पांचवी या छठी बार है जब से मैंने आपको Because you're trying to figure out what are you supposed to do, right? क्योंकि आप पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं Ashutosh, isn't it? तो ऐसा नहीं है Because you've completely bewildered us to what you're supposed to do. मुझे पूरी तरह से विकल्प है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए
So why is Krishna not just convincing you? Do you simply want to be convinced what Krishna wants you to do? And you're prepared to try your best to just follow it and surrender to it? Are you prepared for that? And if not, you don't need a guru. A guru is not like, oh, I just got another opinion from this guru and then that guru. And one guy said I have 5 shiksha gurus, you know. And at first I was like, wow, that's great, man. You get 5 shiksha gurus. What if they all tell you to do something different? How do you know what Krishna wants you to do? I asked him, after you get all these opinions and they're all telling you different things, how do you finally decide what to do? How do you know which one came from Krishna? He said, then I just figure it out. That was his answer. So I just collect opinions. I'm an official opinion collector. And then I make like a big soup. Just stir it up. Or like in ISKCON, you just, do power politics and make a vote. And then whoever wins the vote, then that's what Krishna wants us to do. The collective guru. The Guru Tattva. It's like some impersonal conception, right? It's like the Guru Tattva. It's not a person. It's just like this kind of, place or consciousness of energy, and then somehow the collective guru, the Guru Tattva, it just manifests the truth to you. कहते हैं कि कोई सामूहिक गुरु है, कोई चेतना है, कोई ऐसी जगह है और वहाँ से गुरु तत्व प्रकट होता है। Like some collection of instruments. जैसे कुछ अलग-अलग चीजों को जमा करके create this like the Guru Tattva. वो बनाते हैं the Guru Tattva। And then you just get to like squeeze out some answer, somehow, और आप फिर उसको निचोड़ के कुछ और उत्तर निकालने का प्रयास करते होते हैं। And like whatever finally spits out, then that's the truth, बाहर आती है। Usually it's like some stool or something. Usually not good, It's like some byproduct, Some stool, some nuclear waste, or something like that. So does that clarify everything for you? Does that make it simple? So in all your decisions, right? He's like a guy in the circus, like a juggler. He's just like juggling, making decisions, How's the juggling act going? Is it getting more simple with age? If you're really good, they can throw in like another ball, First it's like 3, and then it's 4, and then 5, right? So material life is like this, okay? It's just like juggling, like. And then everyone's like, wow, how many balls will they be able to juggle, And everyone's just waiting for everything to like just completely fall on the ground, right? And everyone's like, you'll never be able to do it,
And then they start like putting knives, like swords in there. At first it was like rubber balls, now here's some swords. You know. कुछ रबर के balls पे फिर चाकू और तलवारें फेंकने शुरू कर दिया. One guy had like chainsaws, juggling chainsaws. You know. एक व्यक्ति को देखा मैंने वो जो लकड़ी काटने वाली मशीन आ रही होती है उसको वो फेंक के So he was like juggling like 6 chainsaws. And so, I got another one down. ये छह जो है लकड़ी काटने वाली जो आ रही है इसको फेंक रहे हैं इसका पता लगाने का प्रयास. Like one mistake, like the whole family's killed, you know. एक अधिकारी ने You know, he's in a circus and he drops one of the chainsaws and like wipes out a family of 3, you know. यानी सर्कस में चेंसॉ घुमा रहे हैं अगर हाथ टूट गया तो एक परिवार में खड़ा हो जाएगा. Well, don't blame me. I was just trying to help you, you know. उसका दोस्त बताइएगा मैं आपको बस मदद Just करने का trying to प्रयास कर रहा entertain you. हूं. मैं आप लोगों का मनोरंजन करने का प्रयास कर रहा हूं. This is Guru Sadhu Shastra. That's the scary part about the whole thing. तो ये गुरु साधु शास्त्र से है और ये सबसे If you really think about it. हम सोचिए थोड़ा सा. All right? ठीक है. He's like a guy who has a hat and it's just like question mark. Didn't I say this thing before? Yeah, it's like a big question, but like a neon question mark. Wherever he walks, it's just like question. I get questions. Questions. पहन कर आते हैं और उसका क्वेश्चन मार्क का चल रहा होता है मतलब बत्ती की तरह चल रहा होता है उसका सवाल है Like fluorescent question mark, you know? चमक रहा होता है ये वाला बहुत सारे सवाल. So when he's looking for the microphone, right, all I see is this guy with the hat with questions, right? And he's like looking for the microphone because he's got questions, you know? तो जब भी मैं देखता हूँ कि पास माइक्रोफोन है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ उसने टोपी पहनी है और ये क्वेश्चन मार्क है मुझे पूरा चमक रहा है. And this time he's got like 3 of them. इस बार मैंने देखा 3 क्वेश्चन And it's like different colors now. It's like rainbow colors. अभी मैं संतरंगी रंग में पूरा चारों तरफ And I'm like, which one? वैसे तो कौन सा इनमें से मुझे पकड़ना है. Which one should I answer? You know? इनमें से कौन सा प्रश्न का मैं उत्तर दूं. They're like, they're going quick. You have to like, you know, I'm like throwing answers out, like, you know. और ये प्रश्न के पीछे से जो है मैं अपना उत्तर देख रहा हूँ. And the other one's like, it's like a circus show. मुझे लग रहा है कि सर्कस का खेल चल I'm रहा है. just trying to like, you know, hit the bullseye, you know. प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सारे पे तीर मार सकूं. It's like going between the question marks. तो सवालों के बीच से मेरा तीर निकल जा रहा है. It's like slipping through, it's not hitting any question mark, you know. It's like, did you get that? Not really. लोगों ने तीर लगा डाल फिसल के कहीं और चला जा रहा है. मैं पूछ रहा हूँ आपको उत्तर मिला और नहीं You नहीं. still got questions. अभी भी जो प्रश्न चारों ओर दौड़ रहे हैं. And then you throw it, right? It knocks down and then comes right back up. You know, same question, you know. It's like, okay, got that one. इसी तरह मैं उत्तर देता हूँ. प्रश्न गिर जाता है. फिर वापस उठता है. I'm like, I thought I already knocked that one down, you know. फिर मैं सोचता हूँ अरे इस प्रश्न का तो मैंने उत्तर And दे then it दिया. comes back in a different color and you say, no, it's a different question. फिर दूसरे रंग में प्रश्न आ जाता है. तो वही प्रश्न था. दूसरा प्रश्न है ये. दूसरा I've प्रश्न. seen this before, man. नहीं ये प्रश्न मैंने देखा है. ये पहले पूछा है इस सवाल. There's new definitions now. मेरे ने परिभाषा भी बदल गई. This was last week's definition. पिछले हफ्ते की परिभाषा. Are we getting, is it getting simple for you? क्या आपके लिए चीजें समझ में आएगा? He's already so complicated, right? And I just completely made it worse for him, you know? पहले बहुत जटिल है. ये और खराब कर रहा हूँ. I just threw in the chainsaw. So he just had some rubber balls, you know? तो ये कुछ रबर की गेंद उठा रहे थे. अभी मैं Like, you think that's gonna be tough? Try this one, you know? सर ये मुश्किल है. मैंने कहा चलो इसको प्रयास करके देखो. I'll make your life easier. मैं आपका जीवन सरल बनाऊंगा. This will simplify everything. ये आपका जीवन सरल बनाऊंगा. You brought your mother with you? आप अपनी माँ के साथ लेकर आए. कहाँ है आपकी माँ? Is that the mom? ये इनकी माँ है.
Is she crying or is she laughing? She's like, imagine he brings his mother and this is the way I'm talking to his son. Or her son. And she's like, what am I getting my son involved in here? These are his new friends? And the mother's saying, this is my competition? Are you kidding me? So that's why she's happy. She's like, okay, this guy's too crazy. He's not going to convince my son. It's too complicated. This man is too complicated. So do you feel better now? Yeah. Thank you for coming. Hare Krishna. Wasn't I telling one devotee, right? I was telling him his mother is Putana. He brought his mom, you know. She's like Putana. And the mother's like, and the sons are like, oh, I hope Guru Dad knows what he's doing. I hope he knows what he's doing. He just called my mother Putana. And then the next day I saw her, she was like so happy and blissful. She was like, I'm Putana. How did Putana become the boy? This is like a miracle. Even I'm starting to believe this stuff. Even I got faith after that one. I mean, which mother says, I am Putana now? Like you call a mother Putana and she's like happy that she got some mercy from Guru Krishna, right? She's like, I'm she's like a completely new lady, you know? And then you brought your father, right? What happened with Dad? Right? He had like a hat on. He looked like he just escaped out of the local jail, you know? And I was like, who broke that guy out of the jail? I said, are we safe? You know, are we safe? And then the wife's like, you know, this is the guy who called me Putana, you know? I don't know if the guy's gonna try to kill me or what, you know? He's got the hat on and he's looking at me like, this guy looks dangerous, you know? Well, his wife Putana, his kids joined an ashram, I'm in trouble, you know? And they got two sons and they both want to join, you know what I mean? I said, for now, keep one there, you know? Just keep one there. And then what happened? Your father came the next time, right? He looked like a new guy. I'm like, who's this guy? It's my father. Putana made him into a devotee. I couldn't believe it. So it's all good, it's all positive. Impossible can become possible. Alright? It's so simple, isn't it? He's got questions. I remember one person, one of my godbrothers. So one night, late, we were in Bhubaneswar, and it's like 11 o'clock at night. He's telling me all the problems he has in his life. So many problems, so many questions, and I'm trying to help him, and I was like, you know what?
this is way beyond me, you better talk to Gurudev. बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी समस्याएं मुझे बता रहे थे मैंने कहा ये मुझसे समझ नहीं कि आप गुरुदेव से पूछें Because only Gurudev can help you. असल में केवल गुरुदेव आपकी मदद कर सकते So just at that time, Gurudev came out of his bhajan puja and sat in the chair in front of his mud hut. गुरुदेव अपने अकेले के घर से भजन कुटीर से बाहर आए और आकर कुर्सी पे And I said, oh, there's Gurudev, go, there's Gurudev. और मैंने कहा कि गुरुदेव है वहाँ पे आप जाइए गुरुदेव से पूछिए All right, yeah, that's a good idea. तो वो थोड़ा चिंता करने लगे So he's walking up to Gurudev and I'm with him. वो गुरुदेव के तरफ जा रहे थे और मैं उनके साथ आ रहा And before he could get to Gurudev, Gurudev says, you have many problems and questions. गुरुदेव के पास पहुंचने वाले थे गुरुदेव ने उनको कहा आपके पास बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी समस्याएं And that's why I made this joke, like it has like problems, questions, you know, like Q and P. Questions and problems. Right? And they're just circulating like this, questions and problems. Right? इसलिए मैंने ये थोड़ा मजाक किया कि ये क्यू और पी क्वेश्चन और जो समस्या है प्रश्न और समस्या आपके आसपास घूम रहे हैं Sometimes it's a P, sometimes it's a Q. कभी ये पी आता है कभी क्यू आता है Right? It's really not that difficult, you know. Birth by the Guru, Krishna's giving him intelligence. You're coming over there with a hat with P's and Q's and neon lights. For you, it's like mind-boggling to figure it out, right? But for the Guru, it's like obvious. तो आपके मन के लिए बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है ये प्रश्न ये समस्या है लेकिन गुरु को क्योंकि उस कृष्ण से बुद्धि मिल रही है उनके लिए कोई समस्या नहीं You didn't go to England, huh? इंग्लैंड नहीं गए That's why you're happy. इसलिए आप खुश हैं Krishna saved you. कृष्ण ने आपको बचा लिया Because Krishna knows past, present, and the future. क्योंकि कृष्ण को भूत अतीत वर्तमान और भविष्य So he protected you. कृष्ण ने आपको बचा लिया It's minus 9.5 Celsius. He's from England. He says it's, what is it? Minus 9.5. Minus 9.5 Celsius. माइनस 9.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है I thought he was talking about the economy. That's true. मैंने मुझे लगा ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं That's even worse. Right? ऐसा है या नहीं The whole thing is gold over there. सब कुछ पर सोने की तरह बढ़ चुका है People are choosing eating or eating. They're choosing eating or eating. He's talking about himself right now. When he went to England, he's worried about eating and eating. That's all he was thinking about. इंग्लैंड में लोग भी ये चिंता कर रहे हैं कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे और कैसे हम खा सकते हैं He's saying like the people over there, right? The people over there, they're wondering, you know, should I eat or do I need some heat, right? But he's sending me letters like, you know, having trouble eating and staying warm, right? He's talking about himself. ये बता रहे थे कि वहाँ के लोग जो हैं चिंता कर रहे हैं कैसे खुद को गर्म रखेंगे और कैसे खाना जमा करेंगे ये असल में अपनी बात बता रहे हैं हम चिंता हो रही है कैसे गर्म रखना Now he's warm and cozy in India, you know, those fools over there. अभी भारत में आके जो गर्मी मिल रही है मेरे वहाँ के लोग दूर है क्यों It was just that. इसमें क्या Pull him out of there. वहाँ से बाहर निकल I'm living in a tent, right? I'm living in a tent, I'm freezing, I can't eat anything. He's having flashbacks like he was in the war, you know? And then he's talking to him like, you know, those people over there. The guy just escaped out of there. Now he's eating 3 times a day, like a nice blanket, daytime at 85 degrees. अभी आप 3 टाइम खा रहे हैं अच्छा कंबल है गरम कंबल अच्छी गर्मी है For the soul. यहाँ Hare Krishna. I'm happy for you. You and मैं your बहुत खुश हूँ आपके लिए Because when I saw all of that, I got nervous. You're like, you know, you're like enthusiastic and feeling positive, and I was like, uh-oh.
This is gonna not be what you're thinking, you know. क्योंकि मैंने देखा कि आप बहुत उत्साह में हैं और बहुत प्रेरित हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ जब देखा तो मुझे लगा ये सही नहीं है। That's Krishna's mercy. तो ये कृष्ण की कृपा He protected you. है, कृष्ण ने आपको बचा लिया। But if we're like, no, I'm going anyway. लेकिन आप कहेंगे नहीं, अभी मैं Made up my mind. मैं अभी भी जाऊँगा। It just has to be done. नहीं किया ही जाना। Okay. So ठीक है। learn the hard way. आप फिर कठिन तरीके से सीखिए। Heavy lashes. You didn't learn the first time. Here, go again. हमारी माँ थी, आपने पहली बार में नहीं सीखा, अब खुद से सीखिए। Am I being too pessimistic? क्या मैं बहुत सही सोच वाला हूँ? You're all laughing, joking. You can't be that pessimistic. आप लोग सब हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, तो ये इतना बुरा नहीं होगा। Margarita? All right. Am I sufficiently in trouble? अब क्या मैं पर्याप्त रूप से मुसीबत में पड़ चुका हूँ? Have I answered more questions than I created? That's the beauty of this podcast. It just goes on and on and on. You never get to the end, you know. हमारे पॉडकास्ट में ये चलता रहता है, कभी अंत तक पहुंचता नहीं। You just stay, right, and then you leave your body and go back to God. अपना शरीर छोड़ेगा और अपना वापस चले जाएंगे। You're just getting tricked to the conclusion. आपको छल करके निष्कर्ष तक लेकर आया। Oh. This was not at all what I was going to talk about. That's what's most amazing to me. I had everything lined up. It didn't work like that. He's still chanting. He's still moaning and groaning. Moaning and groaning. And some people are like, you know, they're all in a mood of separation. Huh? He's getting paid by the hour. That's why he's dragging it on. If it was just like a flat fee, it'd already be done by now, you know? It's just calculating, okay, how much rice do I need to buy? How much dal? I want that new scooter, you know? This thing can go on for days, you know? Everybody's crying. That's really bad of me. If I leave my body, you're gonna know why. Is it going to heaven or we're going to hell? I'm not sure yet. The problem is, I always tell David, I said the problem is when I'm joking, they become more like confused, you know? So I have to be careful with my joking, you know? Because it just creates like all these other like, what's going on here? So like, was Maharaj joking? Was he serious? You're already confused. Ask this guy. Right? He thinks he can bewilder me by his questions, right? I'm bewildering him by the answers. Okay, let me make this complex question for Maharaj, right? I give him this complex answer back, and he's like,
That's why it keeps getting more and more complex, you know? This thing should have been answered day one, but this is going on for months now. You know what I mean? And it's becoming more complex. The questions and the answers are becoming more and more complex. First time he asked it, I gave him like a simple, honest answer, right? So he didn't accept that, so now it's becoming, you know, built up, you know? So we're, instead of simplifying, we're complicating. Right? Don't you feel more clear now than ever before? When I'm in this situation, I'm always like, okay, how do I get out of this? It's like if you're driving on the highway, right, and your car's like going too fast. Okay, I gotta get off this highway. Like you're looking for some off ramp, you know, like how do I get off of this highway? Like how do you safely get off this highway? Naturally, gradually, but like safely. Because we got this thing going, and it's like, this thing is like, okay. If I do it too quick, we're going to go on two wheels. It's like dangerous. There's no ejection seat. I can't just like get out of here. If I keep going, it might be too long, and we may kill people on the way. So it has to be a precision decision right now. You guys are allowed to laugh, I guess. Who gave you permission? This is supposed to be a serious conversation. Right? Dharma is serious. All right, everyone, thank you very much. I have somehow or other, I'm running out of gas. I could just go on, keep going on, but you'll need ISKCON psychologist help. Maybe I should make an arrangement, right? Like I'll do the preaching, and they can like all come over, man. They can make a fortune after my preaching. They can make a fortune of you people. 10% for the big guy. Thank you, everybody. I hope that helped you somehow. Shri Gauri ki jai, Prabhupada ki jai, Mahaprashadam ki jai. Jai!